Good evening, everyone. How are you? I hope audio and video is okay. Should we start, guys? Hi, everyone. Good evening. Can you please confirm audio and video is okay? Perfect. Uh, how many of you are doing the class for the first time? That means, have you done the REG classes earlier, guys? Have you done the REG classes earlier? Kalyani, Rakshit, Kalyani, Rakshit. Have you done any of the CPA classes? Have you done any of the CPA classes, guys, earlier? As in far. Have you cleared, Mohan? Have you cleared far and audit? Perfect. So I'll start the REG classes, guys. REG is going to be all about US taxation, and the business law, guys. Few things before we start the classes, guys. We are going to conduct the online classes. So fortunately, unfortunately, we are not able to see each other. We are not able to communicate very effectively. So if at any point of time you have any questions, whatever the questions are you are having, please stop me then and there and ask your questions, right? If anything is not clear, stop me then there and ask your question, guys. Since we are having the online classes, so I'll keep throwing the question at you, whether have you understood this or not, what should be the answer in that case. So please be responsive on the question, because that's just my way of understanding whether you are getting the concept or not. Is that clear, guys? So please be involved in the class. Only then you will find much better value. Because if you just watch it lying down on your bed, you will not find it value, guys. So I suggest you to sit on a table chair, guys. Keep a calculator along with you, keep a register along with you. I'll keep writing the notes also, so you guys can take a note also. Keep your book along with that also. So do like a proper class, guys, because then you will find a much better value. If you lie down on the bed and watch it like a YouTube video, you will not find that much value, guys. See, there's nothing new, na classes. You have the book also, you have the MCQs, simulation, everything with you. Why are you doing the classes? You're doing the classes so that you can find the value out of it. So let's you put your efforts also by regularly, consistently, and doing the classes properly, guys. If you have done the classes regularly, trust me, you will find it much better value with that, guys. Okay, so please involve in the class. अगर मैं कुछ question पूछ रहा हूँ आपसे, please answer my question also, guys. Is that okay? So have better engagement in the class. Is that okay, everyone? Yes, no? Everyone understand Hindi? Everyone understand Hindi, English, both? Hindi, English, everyone is okay. Okay. So I'll try to keep mix. I try to keep mix because some people ask me that not to keep 100% English. So I'll try to keep mix of that. But if you want certain thing for me to explain, and particularly in Hindi, just ask me. I'll repeat that for you. It's okay. Perfect. As I discussed, REG is going to be all about the US taxation, and it is going to be business law, guys. Business law is going to be almost 20 to 25%, and balance is going to be US tax laws. US tax. US में what kind of a tax we are going to do? Are we going to discuss sales tax also, VAT also, real estate tax also, stamp duty also? No. We have in our course income tax. In our course, we are having income tax. In US, guys, we are having three kinds of income tax, guys. One is going to be federal income tax. The way we are having central government, similarly, US, we are having federal government. Then we are having state income tax. Then we are having local income tax. Local income tax can be of two types, city and county. So do we have to do everything? Local also, state also, federal also? No.
in your course, we are having only federal income tax, no state, no local. Because obviously US is having 50 states, guys. So it's humanly impossible for anyone to remember the state law of 50 states, guys. Okay. So we don't have local, we don't have state, we have federal income tax only. Is my point clear, guys? Besides that, there are other taxes also. Besides that, there are some other taxes also, which we'll discuss it, guys. For example, we'll talk about the social security taxes. Then we are going to talk about the Medicare tax also, guys. Then we'll talk about the some bit of gift tax also, state tax also. Now, extension of the regulation. Extension of the regulation is TCP. So there are many topics in the reg which we are going to discuss on a surface level, guys. For example, partnership. Partnership, we are going to do the basics of the partnership here, guys. And advanced version of that, we are going to do in the TCP. Is my point clear? I hope you are aware about the discipline. I hope you are aware about the disciplines. Core subject and the disciplines. Are you aware, guys? So reg is TCP is the extension of the reg. TCP is the extension of the reg. So, for example, topics are also like this only. We'll do the basics of partnership in the reg. We'll do the basics of the partnership in the reg. And the advanced version we are going to do in the TCP, guys. Similarly, one of the entity is S corporation. Basics of the S corporation we'll cover here. And the advanced version we are going to cover here. Is my point clear, guys? So, if you are planning to write elective and you're thinking that, yes, I should write the TCP, then my genuine advice would be to you that write your elective immediately after your core subject. That means if you decided that, yes, I will write my TCP subject, first finish the reg and after that immediately write the TCP, guys. Don't write anything else in between. ऐसा नहीं है कि बीच में जाके आपने फार लिख लिया या बीच में जाके आपने something else you have written. Is my point clear what I'm saying? People clear? I thought we'll have a better engagement. I hope it is okay. Point clear? All right. Okay. Any question you have for me before I start, guys? Anyone have any question? No? Okay. No question, guys? Okay. I'll be starting now. In the income tax also, Pavitra, I think they have disabled the mute option because of the recording options, so that the recording could be better with that. You can ask your questions on the chat itself. But if you have longer question, I can unmute you at the end of the session, so that recording will not get disturbed. Shutdown. What is shutdown? Shutdown. You mean to say H1B? Shutdown, you're saying H1B, you're saying, is that? You want to unmute? I'll see it. Wait a minute. We'll take profit and loss. See, move on. All right, I'll move, guys. In India, guys, typically the entire, so here I'll talk about first the income tax, right? Obviously, I'll talk about which income tax we are going to talk about, guys. Which income tax we are going to talk about? We are going to talk about federal income tax. We are going to talk about federal income tax. Now, here we are having in the federal income tax, we are having variety of it. Individual income tax,
कंपनी इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स, इंडिया में भी तो होता है ना आपका, कि अगर किसी इंडिविजुअल का टैक्सेशन इज समथिंग डिफरेंट, कंपनी का टैक्सेशन इज समथिंग डिफरेंट, कैपिटल गेन इज डिफरेंट, सो सेम वे हियर आल्सो वी आर हैविंग अ डिफरेंट टैक्सेशन। इज दैट ओके? So the way we are having various incomes in India, similarly, we are having variety of the incomes in US. But in India, guys, how many ways you classify your income? In how many heads you classify your income, guys? Correct? We classify the income in 5 heads: salary, house property, capital gains, PGBP, and other sources. US, we don't have any concept of heads, guys. So every income we will consider as the gross income. Is that okay, guys? Yes, no. Individuals, guys. Individuals, they file. Individual files the form. Which form individual files? Individual files form 1040. In India, which form individual files, guys? In India, we file variety of the form. ITR 1, 2, 3, 4. It depends on the kind of income. तो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि किस तरह की इनकम है, सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, कैपिटल गेन है। सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ इनकम। यूएस में ऐसा नहीं है, हर कोई 1040 फाइल करेगा, नो डिस्टिंग्विशमेंट गाइस। आई होप इट इज ओके, पॉइंट क्लियर गाइस? लेट्स सी दिस। This is how the form 1040 looks like. Is it visible to you guys? Form 1040 US individual income tax return. For this, you will write your name, last name, every details and talk about the filing status. और यहाँ पे मैं सारी इनकम लिखूंगा अपनी, जो भी इनकम है, I'll write all the income here, guys. That will give me total income, guys. Here, I hope it is okay. That will give me total income. See, you see, this is your total income. यहाँ मुझे टोटल इनकम आ जाएगी। मैं हर तरह की इनकम डालूंगा। देखिए आप, डिविडेंड भी डाल रहा हूँ मैं, मैंने कैपिटल गेन्स भी डाल दिया है यहाँ पे, मैंने वेजेस सैलरी भी डाल दिया, मैंने यहाँ पे टिप्स की इनकम भी डाल दी, सारी इनकम डाल दी गाइस। तो आई डोंट बाइफरकेट गाइस, जैसे इंडिया के अंदर वी बाइफरकेट इन द हेड्स, आई डोंट बाइफरकेट, वी डोंट बाइफरकेट हियर गाइस। इज दैट ओके? पॉइंट क्लियर गाइस? आई एम मेकिंग जो भी फॉर्म व्हिच आई डिस्कस विद यू, आई एम मेकिंग द समरी ऑफ इट, राइट? बेसिक्स एक फॉर्मेट का, एक पूरे स्ट्रक्चर का इंडिविजुअल का क्या दिखता है, आई एम जस्ट ब्रीफली डिस्कसिंग विद यू, और डिटेल पूरे कोर्स में करते रहेंगे हम। तो फर्स्ट इट इज गोइंग टू बी ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम के अंदर एवरी आइटम वुड बी इंक्लूडेड, ऑल द इनकम आइटम्स वुड बी इंक्लूडेड। इज दैट ओके? एनी क्वेश्चन गाइस? From this, I'm going to reduce few adjustments, guys. From this, I'm going to reduce few adjustments. अभी adjustment क्या चीज है? Adjustment is basically some kind of a expenditure for which you will get the reduction. इंडिया के अंदर भी होता है ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पीएफ के अंदर, ईएलएसएस के अंदर, तो 1.5 लाख की आपको एटीसी में डिडक्शन मिलती है। इफ यू आर मेकिंग द म्यूचुअल फंड, इफ यू आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट, नॉट द इन्वेस्टमेंट, इफ यू आर परचेजिंग द insurance, then you get the reduction in ATD. If you are paying the insurance, or if you are paying the interest on educational loan, then you get the reduction in ATE. तो जैसे इंडिया में कई चीजों की डिडक्शन मिलती है, similarly we'll also get the reduction here in which we call adjustment. Is my point clear, people? Adjustments are the various kinds of deductions, Mohan. Almost I'll discuss 13-14 types of adjustment with you. ठीक है? क्या है? I'll discuss almost one lecture, I'll discuss one or maybe 2 lectures, we'll just discuss that. आज मैं आपको सिर्फ ब्रॉड ओवरव्यू बता रहा हूँ, मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा आज का, ठीक है? देन वी आर गोइंग टू मूव टू एजीआई। मतलब आज मैं सिर्फ इस टॉपिक का आज ओवरव्यू दे रहा हूँ। आई स्टार्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर गिविंग दिस ओवरव्यू विद यू। तो एजीआई इज adjusted gross income. Adjusted gross income. So that from the gross income, I have reduced the adjustment. I get the adjusted gross income. From this, guys,
From this, I'm going to reduce standard deduction. I'll reduce standard deduction or itemized deduction. From this, I'm going to reduce standard deduction or itemized deduction. दोनों नहीं माइनस कर सकता, एक ही माइनस करूंगा. Which one would you prefer to reduce? Whichever is higher or whichever is lower? Whichever is higher. My question is, which one do you prefer, guys? Whichever is higher or lower? क्यों higher क्यों? ऐसे क्यों? Higher क्यों prefer करूं? कल्याणी? Guys, please be involved. Kundan, why would you do that? Pavitra? Agrim? Correct. I'll reduce higher amount because जितनी ज्यादा डिडक्शन होगी उतनी मेरी टैक्सेबल इनकम कम होगी. जितनी टैक्सेबल इनकम कम होगी उतना टैक्स कम होगा. गुड फॉर अस ना गाइस. करेक्ट. So that's why we are going to pick whichever is higher. In fact, law does not say whichever is higher. Law says whichever is beneficial. तो beneficial तो पता है ना हमें क्या होगा. Beneficial higher हमेशा ज्यादा होगा. Is my point clear, guys? बट ये है क्या? ये है क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन आइटमाइज्ड डिडक्शन? गाइस, एवरीवन अंडरस्टैंड्स हिंदी, राइट? थोड़ा बहुत तो हिंदी सबको आता है ना? इज देयर एनीवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी? So I'll try to keep it mixed, okay? Standard deduction or itemized deduction, whichever is higher, guys. Then what is standard deduction? What is itemized? Standard deduction is a flat amount, right? It's a flat amount that you are going to get this much standard deduction. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी होता है. इफ यू आर सैलरीड एम्प्लॉय तो आपको 50,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलती है. सेम यहाँ पे कुछ डिडक्शन है, मुझे नहीं मालूम क्या है, विल डिस्कस दैट. तो कुछ भी सर्टेन अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी. आइटमाइज डिडक्शन कई और छोटे 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 कुछ और तरह के खर्चे हैं, उनको देखेंगे. फिर देखेंगे दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल है. विल टेक द हायर वैल्यू. So standard deduction or itemized deduction, whichever is higher, we'll take that. Is it possible, guys? Is it possible कि मैंने 2023 में लिया स्टैंडर्ड डिडक्शन, 2024 में लिया मैंने आइटमाइज्ड डिडक्शन, 2025 में वापस मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन? That means my question is, can I switch year on year? Can I switch? Can I switch year on year? Answer is yes. With old and the new regime option, I guess India has the similar choices. So नहीं, इंडिया से बिल्कुल कंपेयर मत करो. मैं अभी थोड़ी देर आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ मोहन, उसके बाद आई विल स्टॉप डिस्कसिंग अबाउट द इंडिया. इंडिया से कोई कोई भी नहीं है, बहुत ही डिफरेंस है. So don't confuse with that also. Have you heard my conversation? Switching is allowed here, Mohan. So that means year on year I can switch here. Clear? After that, there is QBI deduction, guys. Qualifying business income deduction. That means agar I am running QBI. What is QBI? QBI is qualified business income. तो अगर मैं कोई भी क्वालिफाइड बिजनेस रन कर रहा हूँ, क्वालिफाइड बिजनेस क्या होता है? आई डोंट नो, विल डिस्कस दैट गाइस अगेन. मैं पूरा एक लेक्चर दूंगा इसके ऊपर. तो any kind of a qualified business if I'm running, I get the special deduction for that also, which we typically call it qualified business income deduction. इसको भी माइनस कर दूंगा. And then whatever is coming, guys, would be my taxable income. Are we good? Point clear, guys? These expenditure, guys, ठीक है. एडजस्टमेंट तो इस लाइन से पहले की एक्सपेंडिचर है ना, ये इस लाइन का से पहले का एक्सपेंडिचर है. तो एडजस्टमेंट को वी ऑल्सो कॉल इट अबव द लाइन डिडक्शन, गाइस. अबव द लाइन डिडक्शन. तो कैन यू गेस गाइस, इन दोनों का क्या नाम होगा? आई एम श्योर यू कैन गेस.
Just add C below the line deduction. Clear? Take a screenshot, then I'm running. Done. Should I move, guys? Oh, wages, $100. Interest, income, $10. Dividend income, $9. Above the line, $5. QBI deduction, guys, $2. Itemized deduction, $12. Standard deduction, $15. Clear? What is taxable income? What is taxable income? Try, guys. 97. Okay, let's see. Wages, I'll add. This I'll add. This I'll add. तीनों चीज ऐड कर सकता हूँ मैं, guys. Wages हो गया मेरा, salary head, interest income हो गया, other sources, dividend हो गया, other sources. Can I add all the three? Hmm? Yes. We don't have any head concept in US accounts. So 110, 119 is going to be my gross income, guys. From this, I'm going to reduce. So 190. From this, I'm going to reduce adjustment of 5. That will give me 114, which is adjusted gross income. Then I'll take standard deduction or itemized deduction, whichever is higher. So I reduce the standard deduction, which is $15. I'll reduce $2 also. So that's how you got 97, guys. Am I right? So any question till now? Guys, आराम से पूछिए, जो ना समझ आए प्लीज आराम से पूछिए. देखिए आप, यू आर डूइंग, मेनी ऑफ यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम. ठीक है, कोई किसी भी तरह का कोई भी एक तो वो मत रखना हेजिटेशन कि यार और लोग क्या सोचेंगे, मुझे इतनी बेसिक चीज समझ नहीं आ रही है. ठीक है, सबको समझ आ गया, मुझे नहीं समझ आ रहा. नो वन इज पेइंग योर फीस. If you fail, you fail. No one else is going to fail, guys. So please ask me freely whatever is coming to your mind. Okay? आराम से पीछे, बिंदास होके पीछे, कुछ समझ ना आए तो दोबारा पूछ लीजिए. It's okay? Should I move? Guys, please join timely. I can see some people are joining late. आप मिस कर दोगे, शुरू की बिगनिंग मिस कर दोगे तो आगे कुछ कहानी नहीं समझ में आएगी. People please join timely. People please join timely. अगर जो जो भी बाद में भी ज्वाइन किया है, प्लीज 10-15 मिनट वेट कीजिए. आई स्टार्ट समथिंग न्यू, बट कल से प्लीज ज्वाइन टाइमली, गाइस. ग्रॉस इनकम इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल द इनकम सोर्सेज. एब्सोल्युटली. ठीक है, perfect. In India, guys, what kind of a taxation do we have? Do we have a progressive taxation, regressive taxation, or flat? Progressive, regressive, or flat? प्रोग्रेसिव है. प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है?
correct? As your income is increasing, your taxes will also grow. ऐसे क्यों होता है? Why don't we have a regressive? Why don't we have a regressive, guys? Why is not reverse? Correct. It would be unfair ना अगर मैं रिग्रेसिव कर देता हूँ तो मुकेश अंबानी तो कोई पैसे नहीं दे रहा और लोग जो बहुत पुअर हैं वो बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं. It would be wrong. So that's why we are having a progressive taxation. In India, do we have any taxation which is flat? क्या कोई टैक्सेशन ऐसा है which is flat? Correct. Good point. GST is one of them. In a way, LTCG is also capital gains is also like that. Also, GST is the same thing. फॉर एग्जाम्पल अगर कल को मुकेश अंबानी जाके बिस्किट लेता है तो मुकेश अंबानी भी सेम जीएसटी पे करेंगे. अगर मुकेश अंबानी की मेड जाके बिस्किट लेती है, विल शी पे द सेम जीएसटी? विल शी पे द सेम जीएसटी गाइस? हाँ, शी पे द सेम जीएसटी. इज दैट ओके पीपल व्हाट आई एम सेइंग? यस, नो, मे बी. जस्ट गिव मी अ मिनट. शेयरिंग सम मोर वीडियो. Just sharing some more. By the time anyone has a question, please ask me. In India, guys, um, if someone who is earning salary, that person will pay some taxes. Someone who is, अगर वो शेयर्स पे किसी का एलटीसीजी आ रहा है, someone who is earning salary income versus someone who is earning LTCG income, would the tax rate be same? Will the tax rate be same? अगर कोई सैलरी अर्न कर रहा है वर्सेस किसी के पास एलटीसीजी है, नहीं. This is something we are going to tax at normal slab, which is 5 to 30%, guys. This is something we are going to tax. Stocks at 12.5%, right? So it's a preferential slab. Is that okay, guys? Same here, guys. In US also. So this. Is it visible? इसको छोड़ दो, आप मुझे नहीं मालूम क्या होता है मैरिट फाइलिंग जॉइंटली, मैरिट फाइलिंग सेपरेटली, मुझे नहीं मालूम क्या होता है, विल सी दैट. ठीक है, ये है नॉर्मल स्लैब गाइस. नॉर्मल स्लैब है मेरा 10 to 37%. सेम है ना? इनकम बढ़ती जा रही है आपकी, टैक्सेस परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, बढ़ती जा रही है, स्लैब बढ़ता जा रहा है. इज दैट ओके गाइस? तो दिस इज योर नॉर्मल स्लैब. इसको बोलते हैं नॉर्मल स्लैब गाइस. 10 to 37%, जैसे इंडिया में होता है 5 to 30%. दिस इज प्रेफरेंशियल स्लैब गाइस, जो कि एप्लीकेबल होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड क्वालिफाइड डिविडेंड. व्हाट इज क्वालिफाइड डिविडेंड? वी टॉक अबाउट दिस. दिस इज योर प्रेफरेंशियल स्लैब जो है 0 to 20%. छोड़ दो इसको भी, क्या है 0 to 20%. वो वाला क्या है 10 to 37%. इज दैट ओके? नॉर्मल स्लैब है 10 to 37%, प्रेफरेंशियल स्लैब है 0 to 20%. आर वी गुड विद दैट पीपल? यस, नो? नो, नॉट क्लियर? क्लियर, नॉन क्लियर? Do we need to learn the slab? Absolutely not. Absolutely not.
कोई स्लैब याद करने की जरूरत नहीं है आपको. दे विल प्रोवाइड यू ऑल द परसेंटेजेस इन द एग्जाम ओनली. तो जैसे इंडिया में आपको बड़ी चीजें फिर रट्टे मारने पड़ते हैं, इतने याद नहीं करना पड़ेगा आपको. ठीक है, यू डोंट नीड टू लर्न दैट. सो सो वी डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव द टैक्सेबल इनकम. अब टैक्सेबल इनकम के ऊपर यू विल चार्ज द टैक्स. टैक्सेबल इनकम के ऊपर वी आर गोइंग टू चार्ज द स्लैब. दो तरह के स्लैब लगेंगे, विच एवर द काइंड ऑफ इनकम वी आर हैविंग. इज दैट ओके पीपल? तो दिस विल गिव मी taxes guys. This is something which is going to give me taxes guys. कोई question है guys, please let me know. Now from taxes I am going to reduce. There are few tax credits guys. There are few tax credits I'm going to reduce. ठीक है. What is tax credit? Tax credit होता है किसी गवर्नमेंट कुछ कुछ तरह के बेनिफिट्स दे रही है. इंडिया में डू वी हैव द टैक्स क्रेडिट्स? नहीं, इंडिया में टैक्स क्रेडिट्स नहीं होते हमारे पास. बट यहाँ पे गवर्नमेंट आपको कुछ टैक्स क्रेडिट दे रही है. क्यों देगी? वैरायटी ऑफ इट. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. इफ यू आर हैविंग अ किड यू विल गेट इट. अगर आपका बच्चा कॉलेज जा रहा है तो मिल जाएगा. इफ यू आर अडॉप्टिंग अ किड तो मिल जाएगा. इफ यू आर सेटिंग अप अ सोलर पावर प्लांट तो मिल जाएगा. इफ यू आर परचेजिंग एनी ईवी व्हीकल तो मिल जाएगा. तो ऐसे बड़े सारी कैटेगरीज हैं. ठीक है, I'll discuss almost in two lectures guys. So if you are satisfied then it is going to be you'll reduce the tax credit guys. Is that okay? सो टैक्स क्रेडिट माइनस कर दिया गाइस मैंने. अगर कोई और भी टैक्सेस हैं आपको पे करने हैं, सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस या कोई अदर टैक्सेस हैं व्हिच यू हैव टू पे, यू विल ऐड देम गाइस. एंड देन इफ योर एम्प्लॉयर, अगर आप कहीं जॉब भी करते हो तो एम्प्लॉयर क्या काटता है आपके लिए? क्या काटता है एम्प्लॉयर आपका? एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटता है. टीडीएस. टीडीएस in US we call it withholding tax guys. Same. TDS and withholding tax is the same thing guys. Is that okay? So यहाँ I'll reduce the withholding tax guys, and then whatever is left guys, this will be my taxes payable या फिर refund. तो फिगर अगर ब्रैकेट में आ रही है guys, then it is refund या payable? Then it is refund. Otherwise it's payable. Copy and this is one more question with this. Zero. All right, let's try one question on this. Let's say wages $100. Interest income is $9. Dividend is $5. Adjustment is $15. QBI deduction is 0. Standard deduction is 10. Itemized deduction is 15. Tax rate 20%. नॉर्मली स्लैब होता है लेकिन मैंने कन्वीनियंस के लिए 20% फ्लैट ले लिया है. ठीक है. टैक्स क्रेडिट is 1. Withholding tax 1.5. What is taxes payable? और इसको रहने. Tax credit is 0.8. Withholding tax is also 0.8. Okay. How much taxes payable or refund? Please try.
Let's do it. So I'll take wages, interest income, dividend. So I'll have a gross income. How much is the gross income, guys? Gross income should be 140. I've reduced this $15 from this. Then I'm going to take whichever is higher. Higher is $15 a minute. Then QBI question. Then what is my taxable income, guys? 84. 84. Tax is 20% flat. 20% flat. This is going to be 16.8. 16.8 में से I'll reduce 0.8. Then I'll reduce 0.8 also. This is going to be 15.2 taxes. Clear, everyone? Non-clear? Guys, clear? Anyone, any doubt till now? No? Perfect. I'll start something new now, people, and very, very, very important topic, guys. Definitely you'll get some topics from this. But please, before you start throwing the questions, पूरा topic मेरे आराम से सुनिएगा. There will not be a single question which will not be answered. Please सुनिएगा आराम से. I'll be talking about filing status and dependency rules. I'll first start with the filing status. Filing status. अब ये क्या चीज होती है? See, as I told you, in India we file ITR 1, 2, 3, 4, 5. We file on the basis of income. In US, everyone files 1040, but उसमें थोड़ा सा filing status का फर्क होता है. There are 5 filing status files: single, married, filing jointly. इसको we also call it joint return tax. Okay. Third is married filing separately, MFS. Fourth is surviving spouse. We also call this qualifying widow or widower with dependent kid. Fifth category is HOH. HOH क्या है? Head of household. ये 5 कैटेगरी हैं. You will fall in either of them. Is that okay? Fourth is surviving spouse, या इसका surviving spouse with dependent kid, या उसका दूसरा नाम है qualifying widow or widower. Widow भी हो सकती है, that means female. Widower भी हो सकता है, that means male. Clear? पवित्रा? Serious. तो आपने 1040 सबके लिए कॉमन रहेगी गाइस. You see 1040 is common for all. Whatever is your status, are you single, are you married filing jointly, are you married filing separately, are you head of the household, are you surviving spouse? तो जो भी एप्लीकेबल होगा, आप जो भी हो, मान लीजिए आप सिंगल हो तो आप सिंगल फाइल करोगे. अगर आप मैरिड कपल की तरह फाइल करोगे तो मैरिड फाइलिंग सेपरेट जॉइंट फाइल करोगे. इज माय पॉइंट क्लियर? जो भी एप्लीकेबल होगा यू आर गोइंग टू क्लिक टू दैट. क्लियर? नॉन क्लियर? फर्क क्या पड़ता है?
हाउ डज इट मैटर कि कौन सा है? फर्क पड़ता है बिकॉज दैट हेल्प यू इन फाइंडिंग योर स्लैब। स्लैब अलग है, आप देखो ना सबके स्लैब्स अलग है। रिमेंबर आई टोल्ड यू, बाद में करेंगे। सिंगल का अलग है, मैरिट फाइलिंग ज्वाइंटली, मैरिट फाइलिंग सेपरेटली अलग स्लैब है। सेम सबके प्रेफरेंशियल स्लैब भी अलग है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, इफ यू रिमेंबर, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलग है सबके गाइस। कैन यू सी? सब कुछ अलग है गाइस। तो ऑब्वियसली डिफरेंट फाइलिंग स्टेटस विल हेल्प यू इन चूजिंग डिफरेंट numbers guys. Are we good point here guys? नहीं आप पढ़ो उसको। इस टेबल में देखिए, सिंगल, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, सर्वाइविंग स्पाउस, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। आई नो पांच हो गए ना। सर्वाइविंग स्पाउस को मैरिड फाइलिंग जॉइंटली वाला ही मिलता है। यस, सर्वाइविंग स्पाउस के लिए भी सेम एप्लीकेबल होगा, सिंगल, हेड ऑफ द हाउस होल्ड, यही सर्वाइविंग स्पाउस को भी मिलेगा मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। सर्वाइविंग स्पाउस को मैरिड फाइलिंग जॉइंटली वाला ही मिलता है। क्लियर? सेम हियर ऑल्सो। यहां देख के बताओ मुझे आप, विच वन लुक्स मोस्ट बेनिफिशियल टू यू? सबसे बढ़िया कौन सा लग रहा है आपको? मैरिड फाइलिंग जॉइंट। यहाँ स्लैब देख के बताओ आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? सही, मैरिड फाइलिंग जॉइंट। यहाँ पे 583 के ऊपर आ रहा है 20% का। यहाँ देख लो आप, सेम हियर ऑल्सो मैरिड फाइलिंग जॉइंट। यू विल सी इट मोस्ट एडवांटेजियस। मोस्ट एडवांटेजेस अगर हम जब भी देखेंगे, 99% it is going to be married filing jointly. The most disadvantageous is going to be married filing separately. ऐसा क्यों? अपने आप आपको धीरे 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 when we are going to do the classes अपने आप को पता चल जाएगा कि क्यों कह रहा हूँ। इज माई पॉइंट क्लियर? पहले पांचों स्टेटस क्लियर है गाइस? कब क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, आई टॉक अबाउट दैट नाउ। पहले ओवरऑल क्लियर है, 5 स्टेटस मिलेंगे। क्या कोई ऐसा हो सकता है जिनको इन पांचों के अलावा मिले? कुछ नहीं। You will fall somewhere, guys. I hope it is okay. 2 3 basic hygiene point, guys. जनरली इंडिया में आपको बोलते हैं कि आपका टैक्स निकालते हैं। अगर मैं आपका टैक्स निकाल रहा हूँ, मैं मोहन का टैक्स निकाल रहा हूँ, तो मोहन को हम टिपिकली बोलते हैं इंडिया में असेसी। बट इन यूएस वी डोंट कॉल इट असेसी, वी टिपिकली कॉल इट टैक्स पेयर, गाइस। ठीक है? तो अगर मैं टीपी टीपी लिख रहा हूँ तो टीपी का मतलब ये नहीं मैं टाइम पास कर रहा हूँ, टीपी का मतलब हो गया टैक्स पेयर, गाइस। इज दैट ओके? सेकंड, इंडिया में वी आर हैविंग द कॉन्सेप्ट, वी फॉलो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। जो करंट ईयर होता है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, उसके नेक्स्ट ईयर को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। यूएस में वी डोंट फॉलो एनीथिंग, वी कॉल इट टैक्स ईयर। टैक्स ईयर, इज दैट ओके? जिस भी साल का टैक्स ईयर निकाल रहे हो, टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, उसको टैक्स ईयर बोलते हैं। तो जनरली यूएस में वी फॉलो कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब, कैलेंडर ईयर का मतलब हो गया जनवरी टू दिसंबर। तो अभी कौन सा कैलेंडर ईयर चल रहा है गाइस? अभी क्या कैलेंडर ईयर चल रहा है? 2025। तो मैं इसको बोलूंगा टैक्स ईयर 2025। इज माय पॉइंट क्लियर गाइस? एवरीवन, is it possible, can I follow some other period? I can do that. I can do that provided I have a different business reason of doing that. जैसे वॉलमार्ट करता है, वॉलमार्ट फॉलो करता है 1 से 31 तक ऑल्सो। तो इफ आई हैव अ बिजनेस रीजन आई कैन डू दैट ऑल्सो। आई होप इट इज ओके। मेरा सिंपल पॉइंट कहने का है, वी विल नॉट फॉलो दिस टर्मोलॉजी असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, वी विल यूज अ टैक्स ईयर। इनफैक्ट इंडिया में भी यही आने वाला है। अब जो नया एक्ट आ रहा है उसमें भी वी विल नॉट कॉल द प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, we in India also will start calling it tax years only, guys. I hope it is okay. Point clear, Bradley? Perfect. Point clear? Is it possible that someone is filing 2022 में single, 2023 में that person is filing married filing jointly? Is it possible? That means is it possible कि आपका filing status change हो रहा हो, guys? Possible.
ऐसे जैसे आपकी लाइफ में कंडीशन चेंज होती है, आप मैरिड हो गए, आप मैरिड फाइलिंग जॉइंटली फाइल करो। इज दैट ओके? 2021 में कोई सिंगल, 2022 में दैट पर्सन गॉट मैरिड, तो कैन दैट पर्सन फाइल मैरिड फाइलिंग जॉइंटली? यस। 2023 में दैट पर्सन गॉट डिवोर्स, which filing status that person will file? 2023 में that person got divorced, which filing status will you file? Married filing jointly, separately? Any other answer? My point is 2023 में that person got divorced. What filing status you will file? What is this? Married filing jointly or separately? Is this person married in 2023, guys? Is this person married in 2023, guys? Mohan, is that person married in 2023? No, the person got divorced. Since person got divorced in 2023, we can't give that person. That person is not married. If not married, we can't give them. Maybe that person will claim single. Is that okay, people? Yes, no, Mohan, clear? A and B on 1st January 2024. A and B got married. A and B got married on 1st of January 2024. On 15th of December 2024, they got divorced, guys. Scenario clear? Everyone, scenario clear? People, yes, no, should I repeat? 1st जनवरी को मैंने पूछा ही नहीं मोहन आपसे क्या होगा, मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा है, सिनेरियो क्लियर है गाइस? What status is available for them? What status is available for them? Single, married filing jointly, married filing separately. What status is available? For how many months they are married? For how many months they are married? They are married for almost 11 and a half months. They are divorced for 15 days. तो क्या मैरिड ही देना चाहिए हमें गाइस कि मैरिड ज्यादा दिन के लिए थे? वी डोंट लुक लाइक दिस, ऐसा नहीं है हम दिन देखते हैं इसमें. वी लुक बॉस एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज योर स्टेटस. 31st December को क्या स्टेटस है? आर दे मैरिड ऑन 31st of December, गाइस? आर दे मैरिड ऑन 31st of December, गाइस? पीपल, 31st of December को क्या वो मैरिड हैं? नहीं. अगर मैरिड नहीं है तो दे कांट गेट मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली. सर्वाइविंग स्पाउस भी नहीं मिलेगा पवित्रा. नो वन इज डाइंग. सर्वाइविंग स्पाउस मिलता है जब कोई मर गया हो, हस्बैंड या फिर वाइफ. यहाँ पे तो सब कुछ, हर कोई जिंदा है, तो नहीं मिलेगा. मे बी दे गेट सिंगल. कोई भी क्वेश्चन है गाइस, प्लीज पूछिए. पीपल, एनीथिंग नॉट क्लियर? शुड आई रिपीट पीपल? आई एम राइटिंग अ नोट हियर. Marital status, that is, person is single or married, to be checked, to be checked at the end of the tax year.
Should I move, guys? Clear? Clear? Grima, Kalyani, कुंदन, मोहन, निशा, गुप्ता। गाइस कुछ भी डाउट है तो पूछिए। मैं आपके दिमाग के अंदर घुस के नहीं देख सकता कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ रहा। ठीक है, तो प्लीज मेरे से पूछिए बिंदास। बॉर्डर लाइन बताओ, क्या बॉर्डर लाइन है? मोहन। सारे केसेस कर लेते हैं, जो भी हो सकते हैं पॉसिबली सारे केसेस कर लेते हैं। मोहन, डोंट वरी। लेट्स सी। पीपल, हस्बैंड एंड वाइफ वर मैरिड almost 50 years. They were married, husband and wife, they were married for 50 years, guys. They got divorced on 30th of December 2025. What status would you give to them in 2025? Hmm? Single. Abhinav, Shah, Liani. Guys प्लीज इन्वॉल्व कीजिए, आपको समझ नहीं आएगा। ये कोर्स इतना इजी नहीं है। रैग इज नॉट सो इजी। आप इन्वॉल्व नहीं होगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। रेस्ट आपकी मर्जी है, आपका करियर है, आपकी मर्जी है। बट दे वर मैरिड फॉर 50 years। आपको 50 years से फर्क ही नहीं पड़ता। आप सिर्फ एक दिन देख रहे हो। यू आर नॉट लुकिंग 50 years उनकी हैप्पी मैरिज नहीं देख रहे हो आप उनकी। एवरीवन। चलो 49 years नहीं काफी नहीं है आपके लिए, मोहन। हो सकता है उन्होंने 50 यहाँ पे कंप्लीट किया हो, 29th को कंप्लीट किया हो, 29th को कंप्लीट कर लिया हो उन्होंने 50 years। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऑन 31st of December, what is your status? Are you divorced? And the status available is single. Point clear, people? All right. A and B, they have gone into the New Year party. 31st of December, New Year party, New Year's Eve, and they realize, let's get married. Hypothetically, or at 11:48 p.m. कोर्ट्स भी खुले हुए थे और मान लेते हैं, लेट्स assume they got married at 11:48 p.m. What status is available? 31st of December, 11:48. 11:48. 11:48 also. I hope it is okay, people. I'm just hypothetically taking any cases. Courts will not be open, but just hypothetically, I'm scenario. If he and he, can they file marriage filing jointly? Or can she or she, can they file marriage filing jointly? That means same gender marriages, can they file marriage filing jointly? Hmm? Yes. As far as their marriage is legal, as far as their marriage is illegal, you can file that tax. I hope it is okay. Boyfriend and the girlfriend, they are in the living for 5 years. Can they file marriage filing jointly? Hmm. Can they file marriage filing separately? Because they are not having the marital status. Having boyfriend and girlfriend is not the marital status, so they can't file marriage filing jointly. I hope it is okay, guys. Let's move. Husband and wife. Okay. Husband is not working. Husband is chilling. Husband is not working. Wife is working. So husband income is zero. Wife's income is $100,000. Can they file marriage filing jointly?
means my question is, if either of them is not working, can you still file merit filing jointly? Yes, you can file merit filing jointly. I hope it is okay. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. Let's say tax liability comes $10,000, $100,000 pay. They have filed merit filing jointly, and the tax liability is coming $10,000. Who will pay the tax? Who will pay the tax? इस केस में बताओ आप मुझे, इस केस में बताओ आप, हस्बैंड या वाइफ? केस स्पेसिफिक बात करता हूँ. वाइफ. Everyone is in the favor of wife. No. Tax liability would be paid jointly and severally. इसका क्या मतलब है? Jointly and severally. That means दोनों liable हैं guys, दोनों liable हैं. दोनों liable, when I say दोनों liable हैं, does that means 5,000 5,000? एक मतलब तो ये बनता है, दोनों liable का एक मतलब होता है 5,000 5,000. Guys, clear what I'm saying? That means 50-50. Point clear, Nisha? Clear what I'm saying? But no, यहाँ इसका मतलब 50-50 नहीं होता है. 50-50 नहीं होता. It means jointly and severally liable. That means नहीं, इनकम तो है नहीं ना दिमाग. अगर आप proportionate to income बोल रहे हो तो यहाँ तो जीरो हो गया ना ऑटोमेटिकली. That's the whole point. Jointly and severally का connection इनकम से नहीं है. Jointly and severally means tax authority of US. Tax authority of US को हम बोलते हैं IRS. guys. IRS is Internal Revenue Service. जैसे इंडिया में होता है CBDT, वैसे ही IRS होता है. तो IRS की मर्जी है. IRS कैन कम फॉर द होल अमाउंट. पूरे $10,000 हस्बैंड से भी ले सकता है, पूरे $10,000 वाइफ से भी ले सकता है. तो कोई 50-50 नहीं है, कोई इनकम से कनेक्शन नहीं है. IRS किसी से भी ले सकता है, हस्बैंड से 10,000, वाइफ से 10,000. इज दैट ओके व्हाट आई एम सेइंग? मोहन, क्लियर? That is the meaning of jointly and severally liable. Abhinav, clear? I'm just writing a note for this. Husband and wife would be jointly and severally liable if filing marriage filing joint. Even if either of them is non-working. कोई नॉन वर्किंग भी उससे फर्क नहीं. That's that's their problem number one. ठीक है. If she does not pay, then that's the problem. Husband should think about this ना before agreeing to that. ऐसा तो नहीं है ना वाइफ ने उसकी गन गन पॉइंट पे साइन करवाई, पेपर साइन कर. अगर हस्बैंड को डाउटफुल है कि वाइफ इज नॉट गोइंग टू पे द टैक्सेस और मैं कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो हस्बैंड शुड नॉट साइन दिस मैरिड फाइलिंग जॉइंट. हस्बैंड शुड गो अहेड फॉर द मैरिड फाइलिंग सेपरेटली. क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यस, रिटर्न शुड बी अग्रीड बाय, अदरवाइज कैसे होगा मोहन? आपको सोचो ना. दो बोथ द पीपल हैव टू अग्री टू दैट. बोथ द पीपल शुड अग्री टू दैट. और सेकेंडरी ये पर्सनल इशू है, ठीक है, जो आप पूछ रहे हो पर्सनल इशू है. एज अ टैक्स अथॉरिटी IRS मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से ला रहे हो पैसे. तो जनरली इस केस में फिर आप असेसमेंट में चले जाते हो. जनरली आपने पूछा इसलिए आई एम डिस्कसिंग दिस. आपके कोर्स में नहीं है. तो नॉर्मली इस केस में क्या होगा, IRS विल आस्क द वाइफ. वाइफ मना नहीं कर सकती ना. आप इंडिया में भी मोहन, आपकी टैक्स लाइबिलिटी आती है 3 लाख की, आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ रहा है 3 लाख का, आप कहते हो भाड़ में जाओ मैं नहीं देता. कर सकते हो आप इंडिया में, जो करना है कर लो. तो डिक्लाइन नहीं कर सकते ना आप. डिक्लाइन कैसे करोगे आप?
डिक्लाइन कैसे करोगे? आपस में डिक्लाइन कर सकते हो ना, हस्बैंड एंड वाइफ आपस में बोल सकते हैं। वाइफ कह सकती है मैं तो नहीं पे कर रही, बट आप टैक्स अथॉरिटी को मना नहीं कर सकते ना। टैक्स अथॉरिटी वाइफ को मैं नोटिस लिख देगी तो वाइफ क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर हस्बैंड के पास मान लीजिए, समझ लेना आपके पास, बट अगर आप बोलते हो कि वाइफ के पास भेजा ही नहीं, ठीक है, हस्बैंड के पास है, उसने डिमांड भेज दिया, पहले तो जो डिमांड आती है इसको हम बोलते हैं असेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी डिमांड भी आती है वो कॉमन नाम पर ही आती है, दोनों के नाम पे ज्वाइंटली ही आती है, बट हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूँ सिर्फ हस्बैंड के नाम पर ही आती है, ठीक है। तो इस केस में हस्बैंड कैन से दैट, हस्बैंड कैन प्रेजेंट द केस कि बॉस मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मेरे पास कोई इनकम नहीं है, यू कैन से दैट, देन IRS can reach back to the wife in that also. या अगर हस्बैंड के पास कुछ एसेट है या कुछ है, देन IRS will collect from that. Clear? quickly Mohan. There's a question. Husband and wife, whenever they are filing married filing jointly, whenever they are filing married filing jointly, guys, um, their tax year has to be same. What do you mean by that? That means I can't do this. Husband is following calendar year, wife is following any fiscal year. Can't do that. It has to be same. या फिर तो husband calendar year, wife भी calendar year, या wife fiscal year, husband is also fiscal year. Calendar year, tax year has to be same. Is my point clear? But but their accounting method can be different. मतलब is it very much possible that husband is following accrual basis of accounting, wife is following cash basis of accounting? ये हो सकता है. Differences can be in the accounting method, but not in their tax year. I'm just writing this. For filing, married filing jointly, tax year of both spouses should be same. But accounting method can be different. Should I move, guys? 30th of December को 2024 को हस्बैंड एंड वाइफ की बहुत किसी बात पे बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, एंड देन दे डिसाइड ठीक है, लेट्स गेट डिवोर्स, ठीक है। वो कोर्ट गए कि यार डिवोर्स चाहिए 30th of December, क्या कोर्ट 10 मिनट में दे देगी जेप्टो की तरह? ये लो डिवोर्स चाहिए, ये लो डिवोर्स? ऐसा होता है क्या कि 10 मिनट में दे देगी कोर्ट डिवोर्स बाहर जाते ही? 30th December को गए और कोर्ट ने कहा हाँ हाँ डिवोर्स चाहिए, ये लो? नहीं, फिर टाइम लगेगा कोर्ट को, कितना टाइम लग जाता है? एक दिन, 2 दिन? नहीं, 1-2 दिन लगेंगे कोर्ट में। सी, generally whenever you go into the court, husband and wife whenever they go into the court, कोर्ट ऐसे नहीं देता इमीडिएटली मिलता है, कोर्ट कहता है बॉस सॉर्ट इट आउट, ठीक है, ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। तो जनरली आपने मूवीज में भी देखा होगा कि वो बोल देते हैं कि 6 महीने तक आपस में ट्राई टू रेकनसाइल योर इशू, इतनी जल्दी मत करो, एक दिन लड़ाई हो गई आप चले आए कोर्ट में, नहीं, ट्राई टू रेकनसाइल योर इशू, सो टिपिकली वी कॉल इट द रेकनसिलिएशन पीरियड। ये नॉर्मल लीगल टर्म है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रेकन्सिलिएशन पीरियड। आप इसमें सॉर्ट आउट करो, 6 महीने सॉर्ट आउट करो। अगर भाई फिर भी नहीं चल रहा आपका, इफ यू स्टिल कांट मैनेज इट, देन कम बैक आफ्टर 6 मंथ्स, तो देखेंगे हम क्या कर सकते हैं आपका।
इज माई पॉइंट क्लियर? तो जनरली कोर्ट 6 महीने का टाइम देता है, हर केस में नहीं देता। अगर केस है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, बहुत ही ज्यादा अब्यूज का केस है, तो हो सकता है कोर्ट जल्दी दे दे, रेकन्सिलिएशन ना करे, बिकॉज देन इट इज अ थ्रेट टू अदर पर्सन। बट जनरली कोर्ट रेकन्सिलिएशन पीरियड देता है। इज माई पॉइंट क्लियर पीपल? यस, नो, मे बी। हम क्यों कोर्ट का कर रहे हैं काम? मैं क्या करना? मैं कौन सा रिपोर्ट्स फाइल करना है? ये तो सही बात है आपकी, बट हमें फर्क पड़ता है थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, इफ 1 December 2024 these guys have gone into the court कि भाई डिवोर्स दे दो, कोर्ट ना क्या, चलो भाग जाओ, 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद कब जा आएगा गाइस? 6 मंथ्स कब खत्म होंगे? 31 मई। 31 मई 2025। यहाँ पे कोर्ट कहेगा चलो ठीक है, अब नहीं बना पा रहे आप लोग, देन वी आर गोइंग टू गिव यू डिवोर्स। इज माई पॉइंट क्लियर? 31 मई 2025 को कोर्ट कह देगा चलो जाओ डिवोर्स। अभी कोर्ट पॉइंट क्लियर, सिनेरियो क्लियर, सिनेरियो क्लियर। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवोर्स हो ना हो, वी डोंट केयर। लेकिन बीच में कुछ हो रहा है, इस बीच में कुछ खास हो रहा है। क्या खास हो रहा है? कोई खास डेट आ रही है। खास डेट क्या आ रही है? मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, एक स्पेशल डेट आ रही है आपको, करेक्ट? 31 December आ रही है, हमें उसी से मतलब है। एज अ टैक्स अथॉरिटी हमें उसी से ही मतलब है। अब 31 December को क्या स्टेटस है बॉस? आर दे डिवोर्स? नहीं। व्हाट स्टेटस इज अवेलेबल फॉर देम गाइस? व्हाट स्टेटस इज अवेलेबल फॉर देम? मैरिड। कैन दे फाइल मैरिड फाइलिंग जॉइंटली ऑल्सो? कैन दे फाइल मैरिड फाइलिंग जॉइंटली ऑल्सो? अरे यहाँ तो डिवोर्स की बातें हो रही है कि डिवोर्स ले लेंगे, कोर्ट ने बोला रेकन्सिलिएशन, आप कह रहे हो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली ले लो। लड़ाई अलग, टैक्स का बेनिफिट अलग। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। टैक्स का बेनिफिट आता है तो आपस में करेक्ट पैसे बचाओ। सो यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, वेदर यू टेक मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। इस टाइम पीरियड को वी कॉल इट गाइस इंटरिम पीरियड। अगर इट इज इंटरिम प्रोविजन, इंटरिम पीरियड, प्रोविजनल पीरियड, we also call it temporary divorce also guys. We also call it interlocutory guys. इंटरलॉक्यूटरी, कुछ भी मतलब हो, सिंपल बात है यहाँ पे। दिस इज नॉट अ डिवोर्स, डिवोर्स इज नॉट फाइनल। सिंस डिवोर्स इज नॉट फाइनल, दे कैन क्लेम मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। इज दैट क्लियर पीपल? एवरीवन? शुड आई मूव? क्लियर कलानी? क्लियर? सिंगल, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, और क्या क्या नाम थे guys? क्या नाम था? सिंगल, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, हेड ऑफ हाउस होल्ड, एक और रहेगा ना कुछ? वेरी गुड, सर्वाइविंग स्पाउस। अब इन सबकी ऑलमोस्ट सारी कंडीशंस है। मैंने आपसे आज कुछ भी डिस्कस नहीं किया, मैंने सर्वाइविंग स्पाउस भी डिस्कस नहीं किया, एचओएच भी डिस्कस नहीं किया। आई डिस्कस एवरीथिंग। हर किसी की आपको कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तब मिलेगा। सिंगल एक तरह से ईटीसी कैटेगरी है। सिंगल एक तरह से ईटीसी कैटेगरी है, दैट मीन्स अगर आप कहीं फॉल नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सिंगल में आ जाओगे गाइस। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। यस, नो? तो इफ आई टेल यू गाइस, इफ आई टेल यू समवन इज डिवोर्स, कैन दैट पर्सन कम अंडर सिंगल? समवन इज डिवोर्स, यस। समवन इज अनमैरिड, कभी शादी नहीं हुई है, और आई कैन से नेवर मैरिड, कैन दैट पर्सन ऑल्सो कम हियर? Anyone can come here, guys. I hope it is okay. Point clear. What I'm saying. Should I move, guys? Okay. Any question, guys? No. Okay. You file your 1040.
ठीक है, एज एन इंडिविजुअल यू फाइल 1040. कब फाइल करोगे 1040? व्हेन डू यू फाइल योर 1040? So if the period is calendar year is 2024, that means from 1st January 2024 to 31st of December 2024. So 1040, I'll file by 15th of April, guys. 15th of April 2025. 15th of April 2025. कितने months बाद आता है 15th of April? How many months after this? 3.5. After 3.5. Is that okay? Is it possible for me to get the extension? मैं डिले हो गया, मैं फाइल नहीं कर पा रहा हूँ. Is it possible for me to get the extension? Yes. 6-month extension is possible. 6-month extension is possible, and for getting the 6-month extension, you file the form 4868. But ये फॉर्म 4868 आप पहले फाइल करोगे प्रोएक्टिवली. ऐसा नहीं है आप 20 तारीख को सो के उठे 20 अप्रैल को कि यार मैं एक्सटेंड कर दूं रिटर्न में. You will file for the extension beforehand proactively. Is my point clear? That means after extended due date can be 15th of October 2025. Is my point clear, people? Another point. Extension is only for filing the return. Extension is only for filing the return. Extension is not for paying the taxes. Taxes तो मुझे पे करने हैं 15th of October तक, 15th of April तक. I don't have any choice. Is my point clear, people? Any question? कुछ क्लियर नहीं है मुझे बताइए. क्लियर नो? कल्याणी, निशा, नो क्वेश्चन. कुछ पॉइंट पवित्रा? पवित्रा, व्हाट आई एम सेइंग, मेरी ओरिजिनल ड्यू डेट है 15th of April. इज माय पॉइंट क्लियर? I can get the extension of 6 months. That means I can extend up to 15th of October. But I have to apply beforehand. That means I have to apply before 15th of April. So what I told you, extension जो भी मिल रहा है पवित्रा, it is only for filing the return. It is only for filing 1040. टैक्सेस तो मुझे 15 अप्रैल तक पे करने ही करने हैं. यहाँ पे टैक्सेस पे करने का कोई एक्सटेंशन नहीं है. टैक्सेस तो टाइमली, ऑब्वियसली पैसे तो सरकार को टाइम से चाहिए ना. डिले कर रहे हो रिटर्न तो दैट्स ओके, पैसे टाइम से मिलने चाहिए सरकार को. क्लियर? For married filing separately, guys. If the husband and wife they are filing married filing separately, क्या जरूरी है दोनों के आपस में बातें बंद हो जानी चाहिए? कि आपस में एक दूसरे का बातें बंद होनी चाहिए, एक साथ साथ नहीं रहने चाहिए? इज दैट द कंडीशन? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, देयर इज नो कंडीशन कि आपस में बात नहीं हो रही या साथ में नहीं. इज इट पॉसिबल दैट दे आर स्टेइंग टुगेदर? इज इट पॉसिबल दे आर स्टेइंग टुगेदर? यस. Is it possible if they are staying together and filing married filing separately? They are staying together and filing married filing separately. Possible? Possible. Very much possible. Is it possible they are staying separate but they are filing married filing jointly? अलग अलग रह रहे हैं but filing married filing jointly. Possible. इसका कोई कनेक्शन नहीं है. साथ में रह रहे हो तो फाइल है, नहीं रह रहे हो तो फाइल है. इसका कोई कनेक्शन नहीं है. आई होप इट इज ओके पीपल. That's good. Correct. Correct. 1st January 2024, H and W got married. अच्छी बात है. On 31st of July 2024, unfortunately, wife died.
Generally, when do we look the status कि बंदे married हैं कि नहीं married हैं? We look at the end of the year. We look 31st of December 2024. So on 31st of December, are they married? On 31st of December 2024, are they married? Thirty-first of December. Yes, no. अब इसके दो वर्जन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, बिकॉज शी इज नो मोर, शी इज डेड। अगर वो नहीं है, वाइफ इज नॉट देयर, तो फिर मैरिड कैसे हो सकता है जब दे आर नॉट। नहीं, सर्वाइविंग को छोड़ दो, वहाँ कुछ और होता है, उनका को बात है। दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक बोलता है कि बॉस मैरिड नहीं है 31st of December को, क्योंकि जब वाइफ ही नहीं है या हस्बैंड ही नहीं है तो मैरिड कैसे हो सकते हो? दो लोग रहने चाहिए हो ना अलाइव, तभी मैरिड होते हो आप। आई एग्री विद यू। अनदर स्कूल ऑफ थॉट कह सकता है कि यार कोई बात नहीं, अदर पर्सन डाइड, बट हम हमारा दिल एक साथ है अभी भी। हम यादों में मिले हुए हैं, हमारा दो जिस्म एक जान है, ऊपर हमारा मिलन होगा। राइट, सो यू आर स्टिल टुगेदर। मे बी यस, मे बी यस, बट in case of a death, in case of a death, we don't look the status on the date of death. This is the exception. Do you understand general rule and exception, guys? मैं आपको एक ब्रीफली बता रहा हूँ, I'll keep using it. जनरल रूल एंड एक्सेप्शन होता है गाइस। जनरल रूल क्या हुआ? अगर आप कहीं पार्टी पे जा रहे हो, ठीक है, और आपके पेरेंट्स ने बोला डोंट ड्रिंक एनीथिंग, डोंट ड्रिंक एनीथिंग, तो कैन यू गो एंड ड्रिंक वाटर? कैन यू गो एंड ड्रिंक वाटर इन पार्टी? नहीं, यू कांट डू दैट। अब उन्होंने एक्सेप्शन लगा दिया यहाँ पे, डू नॉट ड्रिंक एनीथिंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स, एक्सेप्ट वाटर। ठीक है, तो कैन यू गो एंड ड्रिंक कोक? कोक पी सकते हो? सिंपल है। कैन यू गो एंड ड्रिंक कोक? यस। कैन यू ड्रिंक पेप्सी? यस। कैन यू ड्रिंक बियर? कैन यू ड्रिंक विस्की? तो ये चीजें पी सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक पी सकते हो, और चीजें नहीं पी सकते। ये तो हुआ ना जनरल रूल एंड द एक्सेप्शन। तो मैंने आपके साथ जनरल रूल क्या किया? आई डिड जनरल रूल विद यू दैट यू विल चेक। कब चेक करोगे आप? यू आर गोइंग टू चेक ऑन 31st of December। यही तो बात हुई थी ना हमारी, कि आप ईयर एंड में चेक करोगे। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन ऑफ दैट। एक्सेप्शन का मतलब क्या है गाइस? कि क्या मैं 31st of December को चेक करूंगा? एम आई गोइंग टू चेक ऑन 31st of December गाइस? नहीं। अगर 31st of December को चेक नहीं करेंगे तो कब करेंगे? In case of a death. So exception, this exception is for the death. This exception is for the year of death. Then we are going to check on DOD. DOD क्या है? DOD is date of death. We are not going to check on year end. We are going to check on date of death. Were they married on date of death? Were they married on the date of death, guys? Date of death पे were they married, guys? हाँ. Since they were married on the date of death, we will consider them as married. I hope my point is clear. Yes, no, maybe. Clear है, मोहन क्लियर है? ठीक है। सवाल आता है 2024 में, what status is available, guys? Status available is married filing jointly. What? Married filing jointly? डेथ से रिलेटेड एक और स्टेटस था ना कुछ, हम याद आ रहा, कुछ था ना डेथ से रिलेटेड, एक स्टेटस था कुछ, है ना, कुछ था? नहीं कल्याणी, मोहन, क्या था स्टेटस डेथ से रिलेटेड? एक सर्वाइविंग स्पाउस, रिमेंबर? तो सर्वाइविंग स्पाउस को कब यूज करेंगे?
करेंगे करेंगे आराम से यूज करेंगे। ईयर ऑफ डेथ में सर्वाइविंग स्पाउस नहीं मिलेगा। दिस इज अ क्लासिक मिस्टेक एवरीवन डज। ईयर ऑफ डेथ, जिस साल में डेथ हुई है, यू विल नॉट गेट सर्वाइविंग स्पाउस। इज माई पॉइंट क्लियर और नॉट? कब मिलेगा मुझे नहीं मालूम, देख के बताऊंगा मैं आपको। आई होप इट इज क्लियर पीपल, एवरीवन। निशा क्लियर? तो ईयर ऑफ डेथ में इफ दे वर मैरिड ऑन द डेट ऑफ डेथ जो है इस केस में, देन द स्टेटस अवेलेबल इज मैरिड फाइलिंग जॉइंटली। शुड आई नोट पीपल? ये यहाँ बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको एमसीक्यूज के अंदर। एमसीक्यूज के अंदर चेक बहुत कंफ्यूज करेंगे, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। आई एम टेलिंग यू गाइस, आई एम राइटिंग अ नोट फॉर दिस। इन केस ऑफ डेथ, ये सिर्फ वाइफ पे अप्लाई हुआ क्या? अगर वाइफ डाई, इज इट अप्लाइंग ओनली इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ वाइफ? बोथ नहीं, इधर दोनों ही चले गए फिर तो कौन रिटर्न फाइल करेगा? इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ ईदर स्पाउस, ईदर स्पाउस, मैरिटल स्टेटस टू बी चेक ऑन द डेट ऑफ डेथ, नॉट एट द एंड ऑफ द टैक्स, नॉट एट द एंड ऑफ टैक्स। टैक्स मैं चेक नहीं करूंगा, एक्सेप्शन हो गया गाइस। रिमूव। कॉपी। यार मुझे नहीं समझ आ रहा, जब हमने स्पेशली बनाया हुआ है डेथ के केस में, तो हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं उस चीज को? अब यूज करेंगे। लेट्स से ईयर ऑफ डेथ इज 2020। लेट्स से वाइफ डाई इन द ईयर 2020, क्या स्टेटस मिलेगा गाइस? व्हाट स्टेटस इन 2020? वाइफ डाई, व्हाट स्टेटस वुड यू गिव? कौन सा? टेल मी स्पेसिफिकली पवित्रा। मैरिड एक स्टेटस नहीं, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली। क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? स्टेटस इज मैरिड फाइलिंग। अच्छी बात। अब सर्वाइविंग स्पाउस कब मिलेगा? बॉटम लाइन ये बताओ। नेक्स्ट 2 इयर्स, नेक्स्ट 2 इयर्स इज सर्वाइविंग स्पाउस। किसको मिलेगा सर्वाइविंग स्पाउस गाइस इस केस में? हस्बैंड को, वाइफ को? हस्बैंड। हर केस में हस्बैंड नहीं है, मैं इस केस की बात करूंगा। दैट मीन सर्वाइविंग स्पाउस। वाइफ तो शी हैज गॉन अपना दुनिया छोड़ के, तो ऑब्वियसली हस्बैंड इज दैट। ठीक है, तो हस्बैंड को मिलेगा सर्वाइविंग स्पाउस। सो सर्वाइविंग स्पाउस इज अवेलेबल ओनली, ओनली हाउ मेनी इयर्स पीपल? ओनली 2 इयर्स, 2 इयर्स आफ्टर डेथ। ठीक है, 2023 में क्या दोगे आप हस्बैंड को? सर्वाइविंग स्पाउस? विल यू गिव सर्वाइविंग स्पाउस? नहीं। विल यू गिव मैरिड फाइलिंग जॉइंटली? मैरिड फाइलिंग जॉइंटली? इफ की कंडीशन बाद में करेंगे पवित्र, सब इफ बाद में करेंगे। नहीं, मे बी सिंगल। इज दैट ओके? आई होप इट इज ओके पीपल। शुड आई मूव? क्लियर? क्या ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि यार अगर सर्वाइविंग है तो मिल जाएगा ऑटोमेटिकली? नहीं, इतनी आसानी से आईआरएस कुछ नहीं देता आपको। आईआरएस कहता है बॉस कुछ कंडीशंस हैं, चुपचाप से वो कंडीशन सेटिस्फाई करो। कौन सेटिस्फाई करेगा गाइस?
हस्बैंड हियर और वाइफ हियर, कौन सेटिस्फाई करेगा कंडीशन? आई एम सेइंग आईआरएस सर्वाइविंग स्पाउस ऐसे नहीं देता। आईआरएस पुट अ कंडीशन ऑन यू, किसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करेगा? हस्बैंड या वाइफ इन दिस केस गाइस? हस्बैंड, सर्वाइविंग स्पाउस। वाइफ तो गई दुनियादारी छोड़ के। इज दैट क्लियर पीपल? Surviving spouse has to satisfy the condition. I hope it is okay people. अच्छा, तो कंडीशन सेटिस्फाई की तो मिलेगा सर्वाइविंग स्पाउस। व्हाट अबाउट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो क्या मिलेगा? तो सर्वाइविंग स्पाउस मिलेगा गाइस, तो सर्वाइविंग स्पाउस मिलेगा, तो सर्वाइविंग स्पाउस मिलेगा गाइस। अब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, नहीं, नहीं मिलेगा। तो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर में, 2021 में? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, सिंगल मिलेगा। इज माई पॉइंट क्लियर और नॉट पीपल? यस, नो, मे बी? इज दैट ओके, नॉन क्लियर? We'll do it in half an hour. Okay. Let's finish this particular topic. I don't want to stop in between. It's a big detour. 20th of March, ऐसे कुछ क्वेश्चन हुआ करे मेरे को पर्सनल चैट पे पूछ लिया करो, फोन डिस्टर्ब है, ठीक है? 20th of March 2024, husband and wife got married guys. Husband and wife, they got married on 20th of March 2020. 2 days, within 2 days, husband died. 22nd March, husband died. 2024, what status is available? 2024, what status is available? Married filing jointly. Even if they were married for 2 days, even if they were married for 2 days. Hmm? Okay. I hope it is okay. Husband and wife, they were married for last 50 years, guys. Okay. On 10th of February 2020, 2020, let's say, they got divorced. Wife could not take this, and within 2 days, she died. Scenario clear? Everyone? Scenario clear? What status is available in 2020? What status is available in 2020? सिंगल, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली नहीं होगा। 50 साल से मैरिड थे गाइस, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली नहीं होगा। Because we are going to look the status, we are going to look the status on 12th of February when she died. Then the status, then the on the 12th of February they were not married, so the status available is not married filing jointly. Is my point clear? Next 2 years, अगले 2 साल में remember surviving spouse मिलता है। 2021, 2022, what status would you give to husband? Husband is the surviving ना, wife die. अगले 2 सालों में क्या स्टेटस दोगे हस्बैंड को? क्या बात कर रहे हो? ब्रेक ले लेते हैं यार, क्या बात कर रहे हो? 2 साल बाद मिलता है ना सर्वाइविंग स्पाउस, डेथ के 2 साल बाद मिलता है ना।
नहीं, ऑलरेडी डिवोर्स। अच्छा, हस्बैंड इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन, हस्बैंड इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन। और बताओ, और बताओ, हस्बैंड ने कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी 2021 में, 2022 में। विल यू गिव हस्बैंड सर्वाइविंग स्पाउस? इस केस में हस्बैंड ने कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर दी। क्या कंडीशन है, बाद में करेंगे। विल यू गिव हस्बैंड सर्वाइविंग स्पाउस नाउ? यस नो? पवित्र, मोहन, अच्छा, आप लोग मान ही नहीं, आप आईआरएस में जॉब करो, आपको ना अच्छी नौकरी मिलेगी आईआरएस। बिल्कुल ठीक है बात, नहीं मिलती। बिकॉज जब यार वो स्पाउस ही नहीं है, व्हेन दे आर डिवोर्स, दे आर नॉट स्पाउस, तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट सर्वाइविंग स्पाउस। इज माय पॉइंट क्लियर गाइस? So when he is not a spouse, there is no question about surviving spouse. Absolutely correct. I hope it is okay, everyone. Should I move? Okay. Let's. Husband and wife, they are married for last 50 years. 10th of February, wife died. 12th of February, husband ने दूसरी शादी कर ली. Husband remarry. Hmm. What status is available for the husband? लेट्स से प्रीवियस वाइफ का नाम है डब्ल्यू, नई वाइफ का नाम है डब्ल्यू 1. ठीक है. व्हाट स्टेटस इज अवेलेबल फॉर हस्बैंड? मैरिड फाइलिंग जॉइंटली विद whom? डब्ल्यू और डब्ल्यू 1? विद डब्ल्यू 1, एब्सोल्युटली, विद द न्यू स्पाउस. क्या ये स्टोरी क्लियर है, ये कहानी क्लियर है यहाँ पर एवरीवन? यस नो? दिशा क्लियर? ठीक. नेक्स्ट 2 years गाइस, 2021, 2022, husband is satisfying the conditions guys. ठीक है. What status is available for husband 2021, 20? सर्वाइविंग स्पाउस मिलेगा ना? बात करें, सर्वाइविंग स्पाउस नहीं मिलेगा. करेक्ट. दैट पर्सन ऑलरेडी मैरिड समवन, तो सर्वाइविंग स्पाउस ही नहीं है वो. करेक्ट. So status available is married filing jointly with W1, with the new spouse. I hope it is okay people. Point clear? Yes, no? ठीक है. कोई क्वेश्चन यहाँ तक जो मैंने बताया है? एक चीज मिस कर रहे हैं. हस्बैंड ने तो अपनी अलग चला गया, हस्बैंड तो फाइल कर ली, बट वाइफ की भी हो सकता है ना कुछ इनकम होगा इस अप टू हियर till 10th of February when she was alive. She might have any income. Does she need to file the return? Does the return needs to be filed here guys? हाँ, रिटर्न तो फाइल करनी चाहिए यहाँ की. Who is going to file? Is wife going to file? How can wife is going to file? इस केस में whoever is going to be the legal executor of the wife. तो जनरली अपनी विल में हो सकता है वाइफ ने लिखा हो कि यार दिस पर्सन मे बी माय सन इज गोइंग टू बी माय लीगल एग्जीक्यूटर, या यू हायर एनी प्रोफेशनल एग्जीक्यूटर. दैट पर्सन विल फाइल द लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द वाइफ. वाइफ की आखिरी इनकम टैक्स रिटर्न लीगल एग्जीक्यूटर फाइल करेगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे स्टेटस यू विल टेक इज मैरिड फाइलिंग सेपरेटली. इज माई पॉइंट क्लियर? यस. I have discussed with you
दैट सर्वाइविंग स्पाउस के केस में मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, कोई कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, क्या कंडीशन है मैंने डिस्कस नहीं किया आपके साथ. क्लियर एवरीवन, आर वी गुड अप टिल हियर? यस नो? What is the condition I have not done with you guys? ठीक है. Now I'll do the condition with you. ठीक है. Now I'm going to discuss the condition with you. Is that okay, guys? ठीक. Do you remember क्या नाम था पूरा guys? Surviving spouse या qualifying widow widower था, यही नाम था क्या पूरा? कुछ और भी नाम था क्या यहाँ पर? Do we have any other name also? Correct. We had with DK. DK is dependent kid. Dependent kid. Is that okay what I'm saying? डीके. आपके पास डीके होना चाहिए तो मिलेगा आपको. डीके का मतलब है डिपेंडेंट किड होना चाहिए गाइस. इज दैट ओके पीपल? यस नो? ठीक है. अब किड्स की भी बड़ी सारी वैरायटीज हो सकती है. किड्स की वैरायटीज क्या होती है? हो सकता है इट इज योर बायोलॉजिकल किड. और क्या हो सकता है गाइस? व्हाट एल्स? स्टेप किड, अडॉप्टेड किड, और कुछ? फॉस्टर किड. फॉस्टर क्या होता है? इजंट इट फॉस्टर एंड अडॉप्टेड द सेम थिंग? Isn't it foster and adopted the same thing? Hmm? क्या डिफरेंस होता है गाइस? आपकी चॉइस है. Have you seen Bhagwan guys? Have you seen Bhagwan movie? नहीं. No has seen? No. Okay. In the Bhagwan, Salman Khan was foster kid. Foster kid का मतलब क्या है? When you did not have the adoption right. अडॉप्टेड किड तो सिंपल है कि आपके पास अडॉप्शन राइट्स हैं. अडॉप्शन राइट्स हैं बीइंग द पेरेंट्स. यू हैव टू गो थ्रू द अडॉप्शन प्रोसेस गाइस. आप अडॉप्शन पेपर को असाइन करोगे, आपको आपको पेरेंटिंग राइट्स मिलेंगे आपको. फॉस्टर में कोई पेरेंटिंग राइट नहीं होते. यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज टू दैट पर्सन. हो सकता है आप उसकी स्कूल की फीस पे कर रहे हो सकता है आप उसके लिए बुक्स अरेंज कर रहे हो सकता है आप उसके लिए फूड अरेंज कर रहे हो, राइट? बट यू डोंट हैव द पेरेंटिंग राइट ऑन दैट. इज माय पॉइंट क्लियर? डिफरेंस क्लियर गाइस? यस नो? क्लियर है पवित्र? No. When we talk about the decay, when we talk about the decay, decay includes all the kids, biological also, step also, adopted also, but not the foster kid. Foster kid include nahi hota. Is my point clear, guys? Any question? Should I move? So that means नहीं होता का क्या मतलब है? That means if let's say husband die, ठीक है, and wife is left with a foster kid. Now can she claim the surviving spouse? Can she claim the surviving spouse? No. But if she is left with biological kid or maybe adopted kid, now can she file the surviving spouse? Yes. Point clear or not, everyone? Should I move? No, people? Quick question. Anything not clear? Please ask, guys. Mohan, clear?
So this is my first condition, that surviving spouse should have a DK. Surviving spouse should have a DK. DK का मतलब है यहाँ पे आपका सारे बच्चे except the foster parents. ठीक है. Second condition, guys. What is the second condition? Second condition is that you are maintaining the home. You are maintaining the home. Who is maintaining the home, guys? कौन मेंटेन करेगा? Who's going to maintain? Surviving spouse is going to maintain the home. Very good. Surviving spouse is going to maintain the home. किसके लिए मेंटेन कर रहे हो गाइस? घर डीके के लिए. यू आर मेंटेनिंग दिस फॉर डीके. ठीक बात. मेंटेन का मतलब क्या है गाइस? मेंटेन का मतलब है वॉट एवर इज द कॉस्ट ऑफ अपकीप. घर को चलाने के खर्चे होते हैं ना गाइस. Whatever is the rent you are paying on that, whatever the expenditure you are incurring in that case, so whatever the cost of upkeep, घर को चलाने के जो भी खर्चे हैं गाइस, इज दैट क्लियर? तो जो भी घर को चलाने के खर्चे हैं गाइस, उसका यू आर प्रोवाइडिंग मोर देन 50%. अगर घर चलाने का खर्चा है ऑलमोस्ट $10,000, यू आर प्रोवाइडिंग मोर देन $5,000. इज माई पॉइंट क्लियर गाइस? So that is the meaning of cost of upkeep. नहीं, point clear नहीं है people? Yes, both needs to be satisfied. In fact, मैं आपको और condition बताने वाला हूँ. Every condition needs to be satisfied. Clear? So second condition is you are providing, you are maintaining the house. Maintaining the house means you are providing more than 50% of the cost of upkeep. Please understand the rationale. Husband died, wife is alive, she is surviving spouse. But is she getting the benefit of surviving spouse just because the husband is dead? That's one of the conditions. That is one of the conditions. She is getting surviving spouse because she is having a, she is having a DK. Guys, clear? You are single. The person is single. पहले क्या था? Double income थी. ठीक है? Maybe wife is earning, husband is earning, so you are taking care of the kid easily. But now maybe husband is no more, wife is left, and you are having kid also, guys. तो आपके ऊपर additional responsibility है. Plus you are actually maintaining the home for that kid. That's why you are getting the surviving spouse. Is my point clear? अगर इनमें से मैं कोई भी कंडीशन हटा देता हूँ, yes, husband die, wife is left, but she is not having any DK, तो क्या उसको surviving spouse मिलेगा guys? She is left alone, she has no kid. Will she get the surviving spouse guys? नहीं मिलेगा ना. हम फाइलिंग स्टेटस की बात कर रहे हैं पवित्र, हम उसका इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ उसको हम सर्वाइविंग, इंग्लिश में हम उसको विडो बोलेंगे या सर्वाइविंग स्पाउस. मैं इंग्लिश की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं फाइलिंग स्टेटस की ही बात कर रहा हूँ आपके साथ. इज माई पॉइंट क्लियर? टैक्स एंगल की बात कर रहे हैं, क्या उसको सर्वाइविंग स्पाउस मिलेगा या नहीं मिलेगा गाइज? गाइज नॉट क्लियर? शुड आई रिपीट पीपल? शुड आई रिपीट इफ इट इज नॉट क्लियर? क्लियर मोहन? क्लियर? पूछो ना मोहन, अपने आप पूछो. आप पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे समझ आएगा? आपको समझ नहीं आया? ठीक है, क्या बताऊं मैं, कहाँ से बताऊं? मैंने तो बहुत कुछ बता दिया. मोहन, व्हाट शुड आई रिपीट? लास्ट पॉइंट तो यही बताया मैंने. लास्ट पॉइंट तो, लास्ट पॉइंट पे क्या पॉइंट है आप मुझे बताओ. मैंने बहुत सारी चीजें बोल दी, आप मुझे लास्ट पॉइंट बताओ क्या था. आपने कहाँ तक सुना है वो बता दीजिए मुझे. चलो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन. ठीक है, तीन कंडीशन है, सुनिए आराम से सुनिए. तीन कंडीशन है. नंबर वन, यू शुड हैव अ डीके. क्लियर है ये? मोहन क्लियर है? डीके, डीके में कौन सा बच्चा इंक्लूड नहीं कर रहे हो?
डीके में फॉस्टर को हटा दिया आपने। सेकंड कंडीशन इज यू आर मेंटेनिंग द होम। आप घर मेंटेन कर रहे हो। किसके लिए मेंटेन कर रहे हो आप घर? फॉर whom you are maintaining the home guys? You are maintaining the home for the डीके। डीके के लिए आप घर मेंटेन कर रहे हो। मेंटेन का मतलब क्या है? मेंटेन मीन्स यू आर वट एवर इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस, कॉस्ट ऑफ द अपकीप, यू आर प्रोवाइडिंग मोर देन 50% ऑफ दैट। यू आर प्रोवाइडिंग मोर देन 50% ऑफ दैट। So you are providing more than 50%. I hope it is okay. So I was saying here that in case of a husband and wife, in case of a husband or wife, someone is getting, in case of a husband and wife, if husband die, if husband die and wife is left, and wife is left, then only when she will get the surviving spouse. She will get the surviving spouse if she is having a decay and you are providing more than 50% and you are having the house for the decay. तो ये सारी कंडीशन देखेंगे हम इस केस में, ठीक है? तो just in case wife is left but she does not have any decay, will she get the surviving spouse? Wife is left, she is having a decay but she is not providing more than 50%। सारा का सारा घर का खर्चा हो सकता है बच्चे के ग्रैंडफादर पे कर रहे हैं। नाउ कैन यू क्लेम एसएस? नहीं। तो बेसिक फंडा क्या है ना मोहन इस केस में? क्यों मिल रहा है आपको सर्वाइविंग स्पाउस? क्योंकि ए यू आर लेफ्ट विद मे बी वन सिंगल इनकम, सेकंड यू आर हैविंग अ किड तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस यू आर पेइंग द मनी ऑल्सो। जब पैसे ही नहीं पे कर रहे हो सकता है ग्रैंडफादर पे कर रहे हो, तो आपको क्यों बेनिफिट देंगे? या आपके पास बच्चा ही नहीं है तो फिर आपको क्यों बेनिफिट देंगे? बेनिफिट वी आर एक्सटेंडिंग बिकॉज यू आर हैविंग द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज माई पॉइंट क्लियर? यस नो? हाउस का मतलब हाउस है, घर होता है जो। हाउस का मतलब तो घर होता है, वही। इज दैट क्लियर? जो बात समझाया वो क्लियर है? हाउस पे मैं दोबारा आऊंगा। नाउ इज दैट क्लियर? मेंटेन मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग मोर देन 50%। नाउ वट एवर इज दिस होम गाइस, दिस शुड बी द प्रिंसिपल रेजिडेंस। किसके लिए ये प्रिंसिपल रेजिडेंस होना चाहिए गाइस? फॉर होम इट शुड बी द प्रिंसिपल रेजिडेंस गाइस। फॉर डीके, सर्वाइविंग स्पाउस में डीके के लिए, डीके के लिए इट शुड बी प्रिंसिपल रेजिडेंस फॉर द होल ईयर। It should be the principal residence for the DK for the whole year. Is my point clear for what I'm saying, guys? Yes, no? प्रिंसिपल मैं उस पर आ रहा हूँ पवित्र, मैंने डिस्कस नहीं किया अभी, कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ये प्रिंसिपल रेजिडेंस होना चाहिए ना। प्रिंसिपल रेजिडेंस का मतलब ये होता है ना पवित्र, दैट आपका एक प्रिंसिपल रेजिडेंस होगा ना। आप मान लीजिए जॉब करते हो, ठीक है? हाँ, आप जॉब करते हो, मान लीजिए आप ईवाई में जॉब करते हो, तो आप घर से वापस घर जा रहे हो, ईवाई जॉब करके वापस घर जा रहे हो, तो घर जाते हुए सोचते नहीं हो ना आप, अच्छा आज मैं किस जगह जाऊं, आज मैं इस घर जाऊं या उस घर जाऊं या उस घर जाऊं, नहीं। आपको पता है आपका एक घर है जहां जाते हो आप हमेशा, चाहे वो कोई घर हो। इज माई पॉइंट क्लियर? दैट्स योर प्रिंसिपल रेजिडेंस। आप हमेशा जाते हो, राइट? हो सकता है आप थोड़े दिन के लिए वेकेशन पे चले गए पवित्र, आप वेकेशन पे चले गए, लेकिन आपको वेकेशन के बाद तो एक ही घर पे आना है ना। आप हो सकता है वेकेशन पे चले गए तो वापस उसी घर पे आओगे, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ योर प्रिंसिपल रेजिडेंस। इज दैट क्लियर? हो सकता है कोई कोई एडमिट हो गया हो हॉस्पिटल में, ठीक है? इसी के केस में करते हैं, बच्चे के केस में करते हैं। मैंने कहा है आपसे दैट शुड बी द प्रिंसिपल रेजिडेंस ऑफ द किड फॉर द होल ईयर। अब होल ईयर का क्या मतलब है? पूरा 365 दिन बच्चा यहीं बैठा रहना चाहिए? नहीं। हो सकता है द किड गॉट सिक और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया 2 हफ्ते के लिए, तो विल आई स्टिल कंसिडर प्रिंसिपल रेजिडेंस फॉर द होल ईयर? विल आई स्टिल कंसिडर? हाँ, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है बच्चा एजुकेशन ट्रिप पे गया हो, वेकेशन पे गया हो, पार्टी करने गया हो 15 दिन के लिए, विल आई स्टिल कंसिडर द होल ईयर? हाँ, ऐसी चीजों को वी कंसिडर एज अ टेम्परेरी एब्सेंसेस गाइस। टेम्परेरी एब्सेंसेस। अगर टेम्परेरी एब्सेंसेस हैं विच इज ओके,
कोई फर्क नहीं पड़ता, नानी के घर, चाची के घर, ताया के घर, मामा के घर, किसी के घर जाए, लौट के अपने घर आ रहा है कि नहीं आ रहा। दैट्स अ सिंपल बेसिक लिटमस टेस्ट। ये भी छोड़ दो आप। हो सकता है बच्चा हॉस्टल में रहता हो, बच्चा 7 महीने हॉस्टल में रहता हो, स्टिल ओके। 5 महीने बाद तो कहाँ आ रहा है वापस, आ तो घर पे ही रहा है ना। होल ईयर का कहने का मतलब है उसको एकदम ही पकड़ के मत रखना, कह रहे 365 से घर से बाहर पैर कैसे रखा तुमने। नॉट दैट बेस इज माई पॉइंट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। हो सकता है 7 महीने हॉस्टल में रहता हो बच्चा, लेकिन वापस कहाँ आ रहा है, वापस इवेंचुअली घर पे ही आ रहा है ना। तो वी कंसिडर दैट एज अ ओके थिंग। That is not an issue because temporary absences are okay. I hope it is okay. Yes, no, clear, non clear. Okay. Any question? No. Quickly read this. You got the book, guys? Have you guys got your book? Nine. Okay, no problem. पवित्रा, आपकी मेरी बुक अलग होगी। आपके पास हार्ड कॉपी है क्या है पवित्रा? पीडीएफ है? हार्ड। ये मेरा है, सब यूनिट 2 है पवित्रा, और इंडिविजुअल टैक्सेशन है। इस मॉड्यूल का पेज नंबर है 11। सब यूनिट 2, पेज नंबर 11, अगर ऐसे मिलेगा आपको तो। नहीं, ग्लाइम, पेज नंबर 33। प्लीज रीड एंड कंफर्म। जस्ट द मार्क। इट्स ओके, यू हैव द पीडीएफ राइट पवित्रा? इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप यू जस्ट रीड फ्रॉम माय पीडीएफ। इज इट विजिबल टू यू गाइस? Mohan, have they asked you to give you the backup? अच्छा, अच्छा, you have not received the access for the Glide, as in Glide का बुक्स का नहीं मिला क्या access आपको? Check with your counselor, जो भी counselor है आपका। What did they say? What did they say? Lime here, Kalyani, but I have the merged pages, right? I have the merged pages of all the PDF. You have the hard copy, Kalyani? Do you have the hard copy, Kalyani? नहीं, PDF है आपके पास। PDF में come to the study unit 2, पेज नंबर 11, Kalyani. Study unit 2 and page number 11. Just read the mark portion and confirm. As you done.
Done, guys. Everyone, should I move? Clear, Mohan? Whatever you have read it. I have a question, guys. Good question. Taxpayer, and let's say husband died. Wife is left. She is maintaining the house. She is having the house. She is maintaining the house. और इस घर में wife is staying, her biological son is staying, and foster kid is also staying. Can she get the surviving spouse? Can she get the surviving spouse? But survive, but foster kid is also staying. Is that okay? उससे फर्क नहीं, ऐसा नहीं है कि फॉस्टर किड ब्लैकलिस्ट कर दिया है कोई आपने. पॉइंट है सिर्फ अगर फॉस्टर किड होगा तो मिलेगा नहीं, उसकी बायोलॉजिकल है तो मिल जाएगा ना आपको गाइस. आई होप इट इज ओके पीपल. क्लियर पीपल? यस नो? ओके. क्लियर? ऑन. एक क्विक क्वेश्चन just for tomorrow. Just for tomorrow, is it possible if we keep the class 5 p.m.? If that works with you guys, just for tomorrow. Many people dropped out, so it's okay. It's not matter. ठीक है. तो वी कीप द सेशन फॉर 5 o'clock. हो सकता है आपका क्लास का लिंक बना हो विच इज फॉर 6:30, बट आप उसी से ज्वाइन कर सकते हो. तो डोंट वेट कि 6:30 5:30 का कुछ और होगा. तो आप जो लाइव बटन दिखता है ना आपको एलएमएस में, उसी पे जाके आप 6:30 वाले पे क्लिक कर लेना. ऑटोमेटिकली द 5 p.m. पे स्टार्ट हो जाएगा आपका. इज दैट क्लियर? ठीक है. परफेक्ट. नाउ वी कैन स्टॉप फॉर अ ब्रेक. नाउ वी कैन स्टॉप फॉर अ ब्रेक. आई सी यू गाइस एट 9. थैंक यू. Hi guys, have you joined? Please confirm. Yes, Pravitra. Timing would be 6:30 to 10:30. Join, Kalyani. Have you joined? Or we have just done. Uh, we have just finished surviving spouse. Now, the only category which is left is head of the household. So I'll talk about the head of the household. अभी तक कोई question है guys? So please let me know. Any question guys? नहीं? I discussed with you that whenever you are filing married filing jointly, let's say you are filing married filing jointly in 2024, and the tax liability is coming $10,000. Clear, guys? Who will pay this? Who will pay $10,000, guys? Who will pay 10,000? It would be paid by both of them. That means their liability is jointly and severally liable. Right? Let's say in after 2 years, guys. Let's say 2026 में, guys. Government said कि नहीं. IRS says नहीं boss. इस पे you have to pay the interest also and कुछ penalty also. Maybe you have done some mistake, whatever. Let's say this amount is coming $1,000. इसको कौन पे करेगा guys? Who will pay this? Again, this will be paid jointly and separately. I hope it is okay.
2023 tax liability is coming $10,000. They have filed married filing jointly. ठीक है 2024 में they got divorced. 2025 में are they married? Are they together? 2025 में are they together? नहीं, they already got divorced in 2024. Clear guys? Now IRS ने कहा कि बॉस ये जो आपने टैक्स पे किया था ना $10,000 का ये गड़बड़ था. You have to pay this 10,000 plus additional 5,000 additional tax plus interest और penalty भी देनी पड़ेगी आप almost $500. Who would be responsible for this? For this 5,500, who would be responsible? Jointly and severally. But are they still married? Are they still married, guys? नहीं. करेक्ट. आप आपस में क्या सीन है आपका? आप are you married or not? Are you separated or not? That's your problem. We need money. We need money, and this is going to be still jointly and severally liable, even if you are not together. I hope it is okay, guys. Point clear? Point clear? Is it possible that husband and wife they are filing the return? Okay. Is it possible husband is filing married filing jointly, wife is filing married filing separately? No. Is it possible husband is filing married filing separately, wife is filing married filing separately? This is possible. This is very much possible. Clear? Is it possible that husband अपना अलग से फाइल कर रहा है married filing jointly, wife अपना अलग से फाइल कर रही है married filing jointly? Is this possible? We have to together file married filing jointly, ना guys? Married filing jointly तो एक ही हो सकती है. Clear? 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 I'll talk about a scenario. I'll talk about the scenario going forward that it is possible that husband is filing head of the household. क्या condition है मुझे नहीं पता. We'll see that. It is possible that husband is filing head of the household. Is it possible wife is filing married filing jointly then? If husband is filing head of the household, is it possible wife is filing married filing jointly? No. Married filing jointly have to be together, guys. So maybe it is possible that wife is filing married filing separately. Is my point clear, guys? या ये भी हो सकता है both of them are filing head of the household. I'll talk about that. That means you have to satisfy the condition of that. Should I move point here, guys? Everyone? So let's start head of the household. First condition of the head of the household is that if you want to claim head of the household, अगर आपको head of the household status लेना है, you should be unmarried. Taxpayer who wants to take the benefit of head of the household, that person should be unmarried. Is that okay? Unmarried का मतलब है आप सिंगल हो सकते हो, आप नेवर मैरिड हो सकते हो. क्या डिवोर्स भी आएगा गाइस इस केस में? कैन डिवोर्स कम हियर? एनीवन हु इज डिवोर्स? ठीक है. फर्स्ट कंडीशन इज या फिर तो टैक्स पेयर अनमैरिड है और कंसिडर अनमैरिड गाइस. ठीक है, मतलब है मैरिड और कंसिडर्ड अनमैरिड गाइस. कंसिडर्ड अनमैरिड. कंसिडर अनमैरिड का मतलब है कि बॉस मैरिड तो हो नहीं, फिर कंसिडर क्यों करेंगे? वो तो डिवोर्स ही हो गया ना. कंसिडर का मतलब कि आप मैरिड हो, यू आर मैरिड बट वी आर गोइंग टू कंसिडर यू अनमैरिड. इज माई पॉइंट क्लियर? When this will happen? When this will happen? This will happen
whenever the person is married but staying apart from whom? Staying apart from your spouse from the last 6 months. Tax year यहाँ खत्म हो रहा है. From the last 6 months, you are staying apart from your spouse. In that case, we can consider you unmarried, guys. Is that okay? Either of them, you should be the taxpayer who wants to claim HOH. अगर HOH चाहिए आपको तो या फिर तो आप unmarried हो या consider unmarried. Is my point clear, guys? Yes, no? तभी आप देखो यहाँ पे, अब देखो आप यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था. अभी देखिए, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दे आर स्टेइंग टुगेदर 12 months, फुल 12 months हैं, कैन हस्बैंड और वाइफ क्लेम HOH? हाँ हाँ, ऑब्वियसली नहीं. अगर दे आर सेपरेटली लिविंग, दे आर सेपरेटली लिविंग 12 के 12 महीने दे आर सेपरेटली लिविंग, इज इट पॉसिबल हस्बैंड इज टेकिंग HOH? यस. इज इट पॉसिबल वाइफ इज टेकिंग मैरिड फाइलिंग सेपरेटली? तो देखिए, आई टोल्ड यू नो पॉसिबल है. इज दैट ओके पीपल व्हाट आई एम सेइंग? शुड आई मूव ऑन? क्लियर? This is my condition number 1. Second condition, guys. Taxpayer. Taxpayer who wants to be HOH. हाँ पवित्रा. So पवित्रा का क्वेश्चन है, कैन हस्बैंड और वाइफ कैन दे फाइल? हस्बैंड भी HOH फाइल कर रहा है, वाइफ भी HOH फाइल कर रही है. यस, आई डिस्कस दिस विद यू. प्रोवाइडेड जो भी मैं और अदर कंडीशन बता रहा हूँ आपको, वो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं. एक ही कंडीशन बताई ना मैंने आपको, और जो कंडीशन बताऊंगा वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए. ठीक है, लेट्स डू सेकंड कंडीशन. Second condition is taxpayer. Taxpayer who wants to claim HOH, guys. अगर HOH चाहिए guys, you should not be a surviving spouse. तो अगर आप surviving spouse हो, if you are a surviving spouse, then you cannot claim HOH. Is that okay? सर्वाइविंग स्पाउस को कौन सा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, कौन सा टैक्स स्लैब मिलता है गाइस सर्वाइविंग स्पाउस को? सर्वाइविंग स्पाउस को मैरिड फाइलिंग जॉइंटली वाला मिलता है, इफ यू रिमेंबर द स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड द स्लैब एंड वी डिस्कस. तो ऑब्वियसली गाइस व्हिच इज बेनिफिशियल? सर्वाइविंग स्पाउस इज मोर बेनिफिशियल. तो अब जब सर्वाइविंग स्पाउस बेनिफिशियल है तो आप यहाँ पे क्यों आओगे? इज माय पॉइंट क्लियर गाइस? अब सर्वाइविंग स्पाउस ज्यादा बेनिफिशियल है तो आप यहाँ पे आके HOH क्यों लोगे? बट दिस इज द कंडीशन, इफ यू वांट टू क्लेम HOH यू शुड नॉट बी अ सर्वाइविंग स्पाउस. मोर क्लियर? लेट्स डिस्कस द थर्ड कंडीशन. टैक्स पेयर. अगर टैक्स पेयर जिसको HOH बनना है, जिसको HOH की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, जिसको HOH का फाइलिंग स्टेटस लेना है, यू हैव टू मेंटेन. क्या मेंटेन करना है? So you can tell me now. मेंटेन द होम. डीके को कैसे मेंटेन करेगा? होम मेंटेन कर रहा है. यू हैव टू मेंटेन अ होम. मेंटेन का मतलब क्या है? हाउ मच यू हैव टू प्रोवाइड कॉस्ट ऑफ अपकीप? मोर देन 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अपकीप. अरे तुम्हें एक तो डेजा वो हो रहा है. कहाँ देखा है ऐसा कुछ? ये तो देखा देखा लग रहा है मुझे. है, you have done the same on the surviving spouse also. Clear people? But सर्वाइविंग स्पाउस में आप घर किसके लिए मेंटेन कर रहे थे गाइस? किसके लिए घर बना रहे थे अपना? डीके के लिए. यहाँ डीके के लिए घर नहीं बना रहे हैं. वी आर मेंटेनिंग द हाउस फॉर क्यूपी. ये क्यूपी क्या है? क्यूपी इज क्वालिफाइंग पर्सन्स. अब क्वालिफाइंग पर्सन में कौन है मुझे नहीं पता, देखेंगे बाद में देखेंगे. कुछ खास चुनिंदा लोगों के लिए आप घर बना रहे हैं. इज दैट ओके एवरीवन? ठीक है. डीके का कितने टाइम के लिए डीके को घर में रहना था गाइस? फॉर हाउ मच टाइम द डीके सपोज टू प्रिंसिपल रेजिडेंट कितने टाइम के लिए होना चाहिए गाइस?
It has to be for the whole year, full year, guys. But यहाँ पे principal residence of this, in this case, guys, it has to be for more than 6 months, guys. Is that okay? It has to be principal residence for more than 6 months. Clear, guys? For more than half a year, guys. तो दो डिफरेंसेस आ गए. एक तो वो था डीके के लिए, यहाँ है क्यूपी के लिए. वहां था होल ईयर, यहाँ है मोर देन 6 मंथ. इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? क्विकली ट्राई वन क्वेश्चन. एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं? आई एम टेलिंग यू नो. कॉस्ट ऑफ अपकीप वाले एक्सपेंडिचर. क्विकली रीड दिस. पेज नंबर 11 का है. ये सारे खर्चे माने जाते हैं क्वालिफाइंग एक्सपेंसेस. रीड दिस. पेज नंबर 33 का. आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन. अगर आप अपनी बुक देख रहे हो तो ये पेज नंबर 11 है. अपकीप पर, अपकीप इज बेसिकली, अपकीप मीन्स घर को चलाने के कुछ खर्चे हैं, मेंटेनेंस कुछ कर रहे हो घर की अगर, तो दैट इज रिपेयर. रिपेयर कॉस्ट ऑफ अपकीप. सेम चीज होगी रिपेयर. घर को चलाने के एक्सपेंडिचर होती है, जैसे कि आपका ड्रेनेज है. ड्रेनेज को टाइम टू टाइम आपको क्लीन करवाना पड़ता है, वरना वाटर लॉगिंग हो जाती है. तो ड्रेनेज इज द अपकीप कॉस्ट, घर को चलाने की कॉस्ट. क्लियर? डन गाइस, डन रीडिंग. ऑलराइट. मोहन क्लियर? स्मूथ. रेंटल एक्सपेंडिचर गाइस. Rental. Total rental expenditure is $800. Repair is 9. Insurance is 15. क्या टोटल कॉस्ट हो गया? 32. क्या 32, 31. टैक्स पेयर इज पेइंग 500. रेंट 800 है, टैक्स पेयर आप 500 दे रहा है. रिपेयर 900 है, टैक्स पेयर 600 दे रहा है. इंश्योरेंस 1500 है, टैक्स पेयर 1000 दे रहा है. Can this taxpayer claim himself as HOH?
Then why not for the term? How much taxpayer is paying? Taxpayer is paying 2100. 2100 कितना परसेंट हुआ? 2100 divided by 3200. How much percentage? Almost 60%. Am I right? So you have more than 50%. So you can achieve. Guys, clear? Everyone? इंश्योरेंस है ना? Why there is no insurance? है तो इंश्योरेंस. बोलिए इंश्योरेंस है. प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस तो मिलेगा नहीं. कॉमन सेंस है. लाइफ इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ अपकीप नहीं है ना. आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया, उससे घर तो नहीं चल रहा है. क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर. इस केस में टैक्स पेयर कैन गेट एचओएच गाइस. इज इट पॉसिबल कि दो लोग एचओएच क्लेम कर रहे हैं सेम चीज के लिए? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल दो लोग ले? नहीं हो सकता. मोर देन 50% है तो एक ने मोर देन 51% ले लिया तो कोई दूसरा नहीं ले सकता ना? कैसे ले लेगा? क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? अरे ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारे हाउस एचओएच ले लेंगे ना दोस्त. सेम हाउस होल्ड की बात हो रही है ना ऑब्वियसली. ओके. क्यूपीज देखनी है. क्यूपीज क्या हुआ? क्यूपीज हुआ. क्यूपीज का ब्रेकअप करते हैं. क्यूपीज में इंक्लूड होगा क्यूसीज. अभी क्यूसीज क्या है? क्यूसीज हुआ क्वालिफाइड चाइल्ड. क्वालिफाइड क्या है, चाइल्ड क्या है? बेसिकली बच्चे हो गए. हर तरह के बच्चे इंक्लूड होंगे. बाकी की डिटेलिंग आई डू विद यू टुमारो. क्या इसमें एफ के भी इंक्लूड होगा? एफ के कौन होता है? एफ के कौन? फॉस्टर किड. क्या फॉस्टर किड भी इंक्लूड होगा इसमें? यस, फॉस्टर किड भी इंक्लूड होगा. ठीक है. और क्या होगा? आई डिस्कस दैट टुमारो विद यू. क्यूपीज में और कौन इंक्लूड होगा? पेरेंट्स भी इंक्लूड होंगे. हु एल्स? रिलेटिव. आई एम सेइंग QPs में who all will be included in the QP. In the QP, QC will be included. Qualifying child. क्वालिफाइंग चाइल्ड में सारे बच्चे इंक्लूड होंगे इंक्लूडिंग फॉस्टर के. पेरेंट्स इंक्लूड होंगे गाइस. क्यूपी में पेरेंट्स इंक्लूड होंगे. क्यूपी में रिलेटिव इंक्लूड होंगे. इज माय पॉइंट क्लियर? Another condition is they should stay together. Stay together means they should stay with the definition we talk about that. ये घर है जिसको कौन मेंटेन कर रहा है? Who is maintaining this house? Taxpayer. Taxpayer who is HOI. So we are saying QC, we are saying parents, we are talking about relative. So I'm saying you are supposed to stay together. That means taxpayer is supposed to stay in that house. तो क्या इस घर में क्यूसी भी होगा, पेरेंट्स भी होंगे, रिलेटिव भी होगा? कि हम साथ साथ है होगी तो बहुत बड़ी फैमिली हो जाएगी फिर तो. हर कोई इंक्लूड होगा इस घर में गए. क्यूसी भी, पेरेंट भी, रिलेटिव भी. यस नो? नहीं. कोई भी. या फिर क्यूसी या पेरेंट्स या रिलेटिव. इज माय पॉइंट क्लियर? बट द कंडीशन इज टैक्सपेयर शुड स्टे हियर. इज माय पॉइंट क्लियर पीपल? पॉइंट क्लियर? यस नो?
मोहन क्लियर? बट 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 यू आर सेइंग कैन भी शब्द का मतलब समझ पा रहे? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. आई एम सेइंग you are supposed to stay with them. You are supposed to stay with them. You मतलब, you मतलब टैक्स पेयर जिसको एच क्लेम करना है, दैट पर्सन शुड स्टे विद द दीज गाइस. इज दैट ओके मोहन? आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन. क्या सब होने चाहिए उस घर के अंदर? क्यूसी भी होना चाहिए, पेरेंट भी होना चाहिए, रिलेटिव भी होना चाहिए? नहीं. कोई भी हो, क्यूसी हो और टैक्स पे रह रहा हो तो मिल जाएगा एच. क्यूसी हो, पेरेंट हो तो मिल जाएगा एच. क्यू सॉरी, टैक्स पेयर हो, क्यूसी हो तो मिल जाएगा, पेरेंट हो और वो हो तो मिल जाएगा, टैक्स पेयर हो, रिलेटिव, कोई भी एक हो, सिंपल कॉमन सेंस है, कोई भी एक बंदा हो तो भी आपको मिल जाएगा. आई होप इट इज ओके. एनी ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम. गुड पॉइंट. क्लियर? बट बट living condition has been waived for the parents. Living condition is waived for the parents. लिविंग कंडीशन इज वेव्ड फॉर द पेरेंट्स का मतलब है, क्या पेरेंट्स के साथ रहना कंपलसरी है? क्या पेरेंट्स के साथ रहना कंपलसरी है? नहीं. दैट इज द मीनिंग ना. लिविंग कंडीशन इज वेव्ड. मोहन पॉइंट क्लियर? बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन यूएस गाइस. जनरली kids are not staying with the parents. Generally, once they get old, they are moving into the assisting living facility या ओल्ड एज होम में या नर्सिंग होम में रहते हैं. तो इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस गाइज. तो अगर पेरेंट्स आपके साथ नहीं रह रहे, पेरेंट्स आर नॉट स्टेइंग विद द टैक्स पेयर, हो सकता है पेरेंट्स ओल्ड एज होम में रह रहे हो, कैन आई स्टिल, कैन टैक्स पेयर स्टिल गेट एच? parents are staying in the old age home, can taxpayer take it? Yes, 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 provided taxpayer is providing more than 50% support. That means जो भी उनका support के लिए requirement है, taxpayer is providing more than 50%, even if you are not staying with them. Is my point clear, people? Yes, no. So I'm just writing a note for this. For HOH purposes, living condition, that is staying together for parents is not applicable. Hence, even if they, even if they are staying in, even if they are staying in old age home, assisted living facility, or nursing home, and taxpayer is providing, taxpayer is providing more than 50% maintenance. Can taxpayer claim at which? It's taxpayer can claim. असिस्टेड लिविंग ओल्ड एज होम होता है, असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी का मतलब अगर कोई
इंडिया में भी असिस्टिंग आजकल तो बनते हैं, ओल्ड एज होम की तरह ही होता है असिस्टिंग लिविंग। अलग घर में रह रहे तभी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसको। क्लियर मोहन? पेरेंट्स आर स्टेइंग इन दिस होम, इस घर को रन करने की कॉस्ट है ऑलमोस्ट $10,000। सन इज पेइंग, सन इज पेइंग $7,000 फॉर दैट, बट पेरेंट्स आर स्टेइंग हियर, सन इज नॉट स्टेइंग हियर। Can son be claimed as H? Can son claim HOH? Son is staying now. Son has started living with them. Now can son claim HOH? But you're not supposed to stay, na? You're not supposed to stay, isn't it? Isn't it? That you're out. Living condition is waived, isn't it? Living condition तो waive थी ना? Correct. That's an optional condition. ये तो आपको एक एक वेवर मिला हुआ है। आफ्टर दैट इफ यू वांट टू स्टे देयर इज नो प्रॉब्लम ना गाइस। वैसे ही है, मान लीजिए आप कहीं पार्टी में जा रहे हो और आपके पेरेंट्स ने जाते हुए बोल दिया पार्टी में दैट बॉस 11 बजे तक वापस आ जाना। आपको पार्टी अच्छी नहीं लगी, आप 9 बजे वापस आ गए, तो पेरेंट्स आपको बाद में भगा देंगे, चलो जाओ 2 घंटे बाद आना। नहीं, इट्स ओके। आप पहले आ गए, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके आगे आने के लिए मना किया तो उन्होंने आपको। आई होप इट इज ओके। सेम, इफ यू आर स्टेइंग विद द पेरेंट्स नो प्रॉब्लम, स्टिल यू विल क्लेम। शुड आई पुट पीपल? टैक्स पेयर इज ओनिंग द हाउस, ठीक है। इसमें पेरेंट्स आर स्टेइंग इन दिस हाउस एंड टैक्स पेयर इज ओनिंग द हाउस, ठीक है। इफ टैक्स पेयर टेक द सेम हाउस, अगर कहीं पे भी रेंट पे लेता अगर ये हाउस, तो इसकी कॉस्ट हो जाती $10,000। अब टैक्स पेयर का तो ओन है, तो टैक्स पेयर को कोई रेंट नहीं देना। तो कैन टैक्स पेयर सेज अगर मैं $10,000 का लेता कहीं फ्लैट, देन आई हैव टू पे $10,000। तो आइडियली आई एम सेविंग दिस मनी, तो इन अ वे मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रही है। सो शुड आई गेट द एचओएच बेनिफिट बिकॉज ऑफ दैट? बिकॉज आई because of my opportunity cost, guys. Can you do that? Is my question clear? Question नहीं clear नहीं है? आई एम सेइंग, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आराम से सुनिएगा। टैक्स पेयर का यहाँ पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है। इस घर का खर्चा है ऑलमोस्ट $1,000, ठीक है। $1,000 है इसका, तो ये $1,000 दे रहा है पेरेंट्स डॉटर, डॉटर दे रही है $1,000। इज दैट ओके? ये घर ओन करता है सन, घर ओन करता है जिसमें पेरेंट्स रह रहे हैं सन, बट इस घर का जो खर्चा है $1,000 जो कि डॉटर दे रही है। आई होप इट इज ओके। पॉइंट क्लियर? ठीक है। नाउ कैन सन सेज बॉस अगर ऐसा फ्लैट कहीं भी रेंट पे लेने जाओगे, तो ऐसा फ्लैट जो जिसमें पेरेंट्स रह रहे हैं, ऐसा घर जिसमें पेरेंट्स रह रहे हैं, $10,000 से कम का मिलेगा नहीं। तो इन अ वे मैं भी तो $10,000 कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। डॉटर कॉन्ट्रीब्यूट करिए 1,000, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग 10,000, तो इन अ वे आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 90%, सो आई शुड गेट द एचओएच। कैन सन डू इट? कैन सन क्लेम इट? कैन सन क्लेम लाइक दिस? No opportunity cost, guys. I hope it is okay. Now is it okay? Should I move? Parents are staying in the old age home. ओल्ड एज होम का खर्चा आता है $10,000। Son 2 is providing 6,500. Son 1 is providing 3,500. Who will claim it actually?
कैन सन टू क्लेम, अगर सन टू फिर भी नहीं रह रहा तभी? सन टू बिल्कुल नहीं जाता पेरेंट्स से मिलने, बिल्कुल भी नहीं जाता। सन वन जाता है पेरेंट्स से मिलने ऑलमोस्ट 40 आवर्स पर मंथ। ठीक है। सन वन कहता है कि बॉस मैं तो सीपीए हूँ और मेरी आर्ली कॉस्ट है $100 पर आवर, तो मैं ऑलमोस्ट 40 घंटे जाता हूँ। तो इन अ वे मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, 3500 ये प्लस 100 घंटे के हो गए मेरे $4000। तो इन अ वे मैं 7500 कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो आई शुड गेट द HOH। कैन यू डू दैट? Again, no opportunity value of your time, guys. I hope it is okay. Point clear, guys? Yes, no. Any question till now? People clear? ठीक. We have done, if you remember, in the DK, I have done with you that बच्चा कभी हॉस्टल जा रहा है, नानी के घर जा रहा है, चाचा के घर जा रहा है, तो is that okay? Can you still claim that, student? Can you still claim for the DK then? Yes, I discussed with you temporary absences were okay. Temporary absences were okay. Same here also, guys. Same here. We are talking about QPs. QPs के लिए भी जो भी हमने बात किया, QPs भी possible है. Temporary absences कभी इधर उधर जा रहे हैं, which is okay, guys. Temporary absences are okay here also, guys. I hope it is okay. Three people we discuss, guys. QC, parents, relative. कितने टाइम रहना चाहिए गाइस इनको? मोर देन 6 मंथ। 6 मंथ की बात हुई हमारी। आर यू सपोज टू स्टे? सबके साथ रहना जरूरी है टैक्स पेयर का? किसके साथ नहीं जरूरी? नहीं, पेरेंट्स के साथ जरूरी नहीं है। करेक्ट। गुड फॉर द टैक्स पेयर, बैड फॉर द टैक्स पेयर? पेरेंट्स वाली कंडीशन हट गई है। इज इट गुड फॉर द टैक्स पेयर, बैड फॉर द टैक्स पेयर? गुड। वेवर मिल गया ना, तो अच्छी बात है। वेवर मिल गया, अच्छी बात है। बट एक हाथ से बेनिफिट दिया, दूसरे हाथ से बेनिफिट लिया। हर केस में होता है 6 मंथ्स, 6 मंथ्स। बट पेरेंट्स के केस में यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम फॉर 12 मंथ्स। तो ऑटोमेटिकली हमने उनकी भी जो कंडीशन थी वेवर स्टेइंग वाली, वो वेव कर दी, बट पीरियड बढ़ा दिया गाइस। दैट विल अप्लाई इवन इफ इट इज ओल्ड एज। इज माय पॉइंट क्लियर? दैट मीन्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम फॉर whole year, guys, in that case for our parents. Is it okay, people? I'm just writing a note for this. Taxpayer must pay more than 50% of cost of upkeep. ठीक है? For a home, which is parents main home. Principal residence for the whole year. Done? Copy? अब आपने कुछ सब कुछ समझ लिया है। वापस से आते हैं उस सवाल पे। यू आस्क मी, हस्बैंड वाइफ, is it possible husband is claiming HOH? Is it possible husband can claim HOH? क्या हस्बैंड क्लेम कर सकता है HOH?
क्या पॉसिबल है वाइफ एच क्लेम कर रही हो? इज इट पॉसिबल वाइफ? दैट मीन्स दोनों के दोनों एच क्लेम कर रहे हो guys? दोनों क्लेम कर सकते हैं एच का? मोहन, यस, बट फॉर अ डिफरेंट ना, फॉर अ डिफरेंट। दैट मीन्स हो सकता है हस्बैंड अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रहा हो, करेक्ट? वाइफ अपने पेरेंट्स का ध्यान रख रही हो, दोनों क्लेम कर सकते हैं एच। इज इट ओके पीपल? यस, नो? Quickly read it from the book. Simple. I'm here, page number 32, guys. या फिर आपकी बुक में कुछ और पेज होगा, पेज नंबर 10। Sure. Finish rest of it, I'll do it. No problem. Done reading, guys? I'll discuss that. No worries. Are you done reading the rest of it? Hmm? Kalyani, draft, third point. हाँ, सेम चीज है, वही तो। ये ना, the spouse is not the member of the household for the last 6 months, राइट? ये तो हमने डिस्कस किया था ना, कि यू आर अनमैरिड और यू आर कंसिडर्ड अनमैरिड। कंसिडर अनमैरिड का मतलब क्या था मोहन? दैट यू आर नॉट स्टेइंग विद द स्पाउस इन द लास्ट 6 months। सेम चीज थी ना? रिमेंबर, वी डिस्कस द कंडीशन, सेम कंडीशन। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? फिल क्वेश्चन?
Now you guys can read rest of it also. Filing status, we have already discussed this, guys. Same single night filing plan. Check whatever is relevant for you. All of it we have done. Quickly read this also. Yes, Gupta will do that. All good. ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो आप, पवित्रा। गूगल पे मिल जाएगा आपको नाम। बट बहुत जरूरत नहीं है आपके लिए। राइट। आपके एग्जाम के लिए पर्पज से बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, सारे शेड्यूल्स वगैरह सब आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। बट एग्जाम पर्पज के लिए आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। जस्ट योर नॉलेज, अभी मत टाइम वेस्ट कीजिएगा। वंस यू क्लियर योर सब्जेक्ट तब आराम से कीजिएगा इसको। एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। इन एच ओ एच फॉस्टर चाइल्ड इज ऑल्सो इंक्लूडेड, राइट? करेक्ट। क्यूसी में आ जाएगा।
Any question, guys? Anyone, any question? Mohan, question? Any question while reading? पढ़ लेना, आई होप आपने पढ़ लिया हो. We can try questions, guys. Just give me a minute. Let's try the questions, guys. Okay. Where is the deduction for the QBI be applied? As a deduction from the AGI separate from the standard deduction and actualization. Mark, Molly met at the New Year's party. Pretty much what we have done it. Uh, they studied bonded, married at 11:30. Stated was married by 12. Give me answer in ABC form, guys, only. Give me answer in ABCD format. Lisa was married to two kids. Her husband died in April and she did not remarry for this. Which filing status? In the current year, it was only year of death, it was only married filing joint.
Which of the following status is correct if you did not live with the spouse at any time and you file a separate return? इसको छोड़ दो इनको ट्रेडिशनल रिटर्न और छोड़ दो. Are they divorced, guys? Are they divorced? People, are they divorced? Come on. Being legally separated हो तो गए. Legally separated है तो it's not married filing second. Single हो तो clear what I'm saying? क्या अलग मुझे नहीं पता. सेम चीज होगी. डिवोर्स का मतलब ये लीगली सेपरेट हो. अलग तो सेपरेट तो कोई भी रह सकता है. लीगली सेपरेट डिवोर्स तो एक ही चीज होती है. जो is 37 years old, his wife died during the year, has not remarried. His wife, deceased wife, there is no income. She has minor child. Joe paid all the cost keeping the home. You have paid all the support in that case. What is the lowest available? It's the 5. What is the status available? Merit filing jointly. Mary's spouse John died in 2019. 2020 का status होगा. Very good. Everyone saying deal. In case of a parents, guys,
Are you supposed to stay with them? For HOH, are you supposed to stay with them? Hmm? With the parents, are you supposed to stay? No. So, when they are staying in the assisting living facility, is that okay? Is that okay if they are staying? If but generally QPs के लिए, QCs के लिए, relative के लिए, what is the timeline? कितने टाइम तक होना प्रोवाइड करना है आपको? 6 months. For parents, what is the period? For parent, what is the period? 12. आपने कब किया है? Answer. फिर भी सिंगल कुछ नहीं बचा तो सिंगल पे आ जाते हैं हमेशा. कुछ नहीं हो सकता. क्लियर मोहन? क्लियर? Any other answer? Kalyani? B. I got A, B, B. बस सी भी बोल दो कोई. ABCD हो जाएगा पूरा. हम्म. Fox spouse died. ठीक है. सर्वाइविंग स्पाउस को नहीं. Why पवित्रा? Because 4 years before. ठीक है. Surviving spouse is available only for the 2 years. I hope it is okay. You have filed the joint return. You did not remarry, but continue to provide the support to the minor child who is living with you. What is the most advantageous? Most advantageous is head of the household. Head of the household ज़्यादा advantages है ना. Better slab, better everything. So it should be the answer. Clear? Learning. H and W, childless couple with no dependent, lived apart on December 31st. They were legally separate. Based on the facts, which of the following is the only filing status choice which is available?
For the federal income tax purposes, an individual is considered to be married for the whole year in the following situation, except we'll see here. Live with another person over the half year as husband and wife. It does not recognize the command. Very good, guys. Generally, काफी लोग इसमें गलती करते हैं, but good. We're not out. D for which Mohan? I'm circling something. ठीक है, उसको देखो. Should be the answer. What's your answer, Mohan? क्या कंडीशन? क्या कंडीशन? सर्वाइविंग. क्या होना चाहिए आपके पास? बोल भी रहे हो लेकिन देख नहीं रहे हो. अच्छा, व्हाट एल्स? बस यही कंडीशन. इज दिस द ओनली कंडीशन? डीके की कंडीशन है ना. यहाँ पे जब लिखा हुआ है यू आर लिविंग अलोन ना, सर्कल भी कर दिया मैंने, आप अभी नहीं देख पा रहे. When you are alone living, then there is no decay, na? There is no decay. There is no assets. Clear? Not clear? Good. Good, Pavitra. Clear, Kalani? B. As of 31st of December, Michelle's were being separated and maintain the separate household. No kids. What status is of it? And similar over.
B. Correct. Year of death is married filing 20. B. Correct. We are looking except. We are looking except. Correct. Good point. Your parents must live in your homes. That's not a condition. Good point. Hmm. Milton, 39 years of age, is divorced from the wife since year one. They have two kids. One child lives with the mother, another child lives with the mother, guys. Children have been their respective parents from March, guys. Milton provides all the support. What is the lowest status in that case? My parents. C for this. Peter's unmarried daughter lived with him in his house. Peter owns the house and pays all the cost. Ex-wife did not live with him at any time. What is the status in that was? Correct. I should not argue. I should have. Okay. See, A. Who would not classify as a qualifying purpose for this? Your aunt related to your blood, but she's not staying with you. Correct? Besides.
So, Pavitra, you were saying A, right? Hmm. Okay. Phil is unmarried, 2020. His dependent daughter, Suzanne, lived with him all the year. Property tax is 2,500 and the mortgage 5,000, where he and Suzanne live divided equally by the ex-wife. तो आधे पैसे ex-wife दे रही है, आधे पैसे फिर दे रहा है, तो कितना हो गया? 2,500 प्लस 7,500, तो 7,500 हो गया. फिल कितने दे रहा है? हाफ ऑफ दैट, 3,750 प्लस यूटिलिटीज है घर के अंदर 200, 200 पर मंथ, तो ये हो गया 2,400. करेक्ट. ये हो गया 0,5,650. क्लियर? फिल इज पेइंग ना, मोहन, फिल इज पेइंग दिस अमाउंट 650. क्लियर? Okay, last question, easy one. I want everyone to be correct on this. Do it carefully. Easy question. E for this, you are saying? This question you are saying, no? Husband died in 2017. Status we are looking in 2020. That means after 2 years. Is that okay? So after 2 years, surviving spouse is not available. So the status available is head of the household. Good, that's it. Everyone, is that okay? People? Yes. Any question before I wrap today? People? Anyone, any question? अच्छा, मुझे गवर्नमेंट शटडाउन का मतलब क्या है? Sure. Yes. Hello, sir. Can you Yeah. hear Hi. me? Yes, Pavitra, please. The issue is going on it with regarding to the funding to all the governments departments in US. Will it affect the CPA exams like that, like evaluate? I'm not aware about this. Please help me out. Is there any which funding you are saying? Government shutdown No, करके there search are. करूं? हाँ, search करो. I have not tracked it. अच्छा. Why this shutdown is happening? I think the budget is not released like issue. Anyone aware what is the issue? Mohan, Kalyani?
Means will there be any effect for evaluation like that if we send them? नहीं नहीं, आई थिंक इज इट बिकॉज ऑफ द फिस्कल डेफिसिट क्या, इज इट बिकॉज ऑफ द डेट? They did not release the budget, it seems, for the year. या वो तो हर साल होता है ना आपका। सी, थोड़ा सा इज जस्ट अ स्मॉल पर्सपेक्टिव हियर। इफ यू सी जी, if you see US का debt is very high, right? US, if it is regarding that, I think this is the story everywhere. If you remember, ये 2 साल पहले भी सेम स्टोरी आई थी। तब उन्होंने बोला था कि अम, क्या करना है, बजट बढ़ाना है, टैक्स बढ़ाने हैं, क्या करना है, बिकॉज यूएस का डेट इज वेरी हाई। ठीक है, यूएस का Okay. डेट इज वेरी हाई। ठीक है, तो हाँ वो देखिए ना स्टोरी में, तो यूएस का डेट इज वेरी हाई। तो डेट जब हाई होता है ना, तो क्या तरीके होते हैं, दो ही तरीके होते हैं डेट को कम करने के लिए। या फिर तो अपने खर्चे कम करो आप, ठीक है, या रेवेन्यू बढ़ाओ। ठीक है, खर्चे कम कैसे करोगे आप, कि जितनी भी गवर्नमेंट फ्रीबीज देती Government है, को. हाँ, तो वो सब Yeah. कम कर दे आप। या फिर तो वो नहीं कर सकती, अगर वो कर देगी तो गवर्नमेंट की दुकान बंद हो जाएगी। सेम इंडिया में भी होता है ना, मोदी ने अगर वो देने बंद कर दिए फ्रीबीज, तो दुकान बंद हो जाती है पॉलिटिशियंस की। या दूसरा ऑप्शन रहता है गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा दे। गवर्नमेंट टैक्सेस भी नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि कल को टैक्सेस बढ़ा दिए तो उनकी जो वोट बैंक है वो चली जाएगी। ठीक है, तो ये चिकन एंड एग स्टोरी है जो हमेशा होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर बारी थोड़े हर बारी थोड़ा सा और पैसे प्रिंट करती है, जिससे गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है। बट आई डोंट थिंक गवर्नमेंट यूएस में कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा यूएस को। तो ये हर साल की स्टोरी है। ये बात ठीक है कि जीडीपी टू डेट रेशियो बहुत हाई है यूएस का, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई है। जैसे इंडिया का धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे इंडिया का बढ़ना शुरू हो गया है, बट यूएस का बहुत ज्यादा है। बट आई थिंक इन द लॉन्गर रन दे फिगर आउट सम सोल्यूशन। तो आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी अबाउट This दिस। won't affect our evaluation, that NASBA or some CPA exams, anything, right? नहीं नहीं नहीं, उसमें टाइम नहीं लगेगा, उसमें उस पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे लगा आप जॉब वगैरह से रिगार्डिंग कुछ पूछ रहे हैं, नहीं नहीं, उससे नहीं. उसका फर्क नहीं पड़ेगा। Okay. नहीं, बिकॉज मैनी पीपल हैव अ डाउट रिसेंटली ऑल्सो कि H1B कैंसिल होने लगा है, H1B पे फीस लग गई है, तो क्या जॉब में फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यूएस को सीधा सिंपल कहानी है, अगर यूएस को फर्क पड़ गया तो इंडिया वैसे भी बर्बाद है ना। तो अगर यार सिंपल है ना, अगर कहना नहीं चाहिए, बट वी आर द पुअर कंट्री, चाहे एक्सेप्ट करें ना करें हम लोग, कुछ भी पॉलिटिक्स चलती रहे, वी आर अ पुअर कंट्री। तो अगर जब वो रिच कंट्री अगर गिर गई, तो पुअर कंट्री विल नॉट सस्टेन, दैट इज द फैक्ट। वी लाइक इट, वी डोंट लाइक इट, दैट्स हाउ इट इज। तो यूएस With विल H सस्टेन। जी, with H1B visa also there will be effect, right, sir? बहुत फर्क नहीं पड़ता ना उससे, पवित्र इम्पैक्ट अगर आप देखोगे ना, उससे काम ज्यादा ही आएगा। हो सकता है कि पहले तो ये बोला था उसने कि हर साल लगेगा 100,000, बट वो आई थिंक बढ़ गया है। वो 100,000 हर साल नहीं है, सिर्फ वन टाइम है। ठीक है, हुएवर इज कमिंग फर्स्ट टाइम। सेकंड, ये एग्जिस्टिंग H1 के लिए है भी नहीं, तो ये तो जो नए बंदे को आप बुला रहे हो उसके लिए है। तो कम हो जाएगा, आई एग्री, लोगों का मूव करना कम हो जाएगा, बट इन अ वे इट इज गुड फॉर यू, बिकॉज आपके पास काम ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। फिर उसका मतलब people are not moving there, then the more work will come for you. So it's a good thing. So still it is a good thing. Still it is a good thing. See, I think ऐसा नहीं है कि I teach CPA, that's why I'm saying. But if you ask me in the accounting course है, कौन कौन से accounting courses हैं? CPA हो गया, ACCA हो गया, इंडिया का CA पकड़ लो, CFA पकड़ लो, चलो, है ना, अकाउंटिंग कोर्स नहीं है कि फिर भी CFA पकड़ लो। आउट ऑफ ऑल, इफ आई लुक द रिटर्न, इफ आई लुक द एफर्ट वर्सेस रिटर्न रेशियो, CPA का सबसे अच्छा एफर्ट वर्सेस रिटर्न रेशियो है। एफर्ट वर्सेस रिटर्न मतलब कितने एफर्ट मार रहे हैं, उसके बाद कितनी रिटर्न आ रही है। सीए इज अ गुड कोर्स, लेकिन आपने कितने एफर्ट मारते हो आप सीए में करने के लिए, 4 साल 5 साल घिसते रहते हो, उसके बाद आपकी रिटर्न आ रही है। और प्रीटी मच जो सीए कर रहा है आज के टाइम में, वही सीपीए काम कर रहा है, वही सब कुछ काम कर रहा है। एवरीवन इज वर्किंग ऑन द बैक ऑफिस, एवरीवन इज वर्किंग ऑन द शॉर्ट सर्विस। तो प्रीटी मच उतने ही पैसे कमा रहे हो जितने एक सीए कमा रहा है, और सीए से बहुत एफर्ट कम मार रहे हो। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? Yes. सीएफए का एक टाइम पे चार्म हुआ करता था, लेकिन जिसकी पासिंग परसेंटेज 50% है, उसका भी कोई चार्म नहीं बचा हुआ, उसका भी कोई भी चार्म नहीं बचा हुआ है सीएफए का। देयर यूज टू बी अ सीएफए का चार्म, अब वो भी खत्म हो गया है। और सीएफए अपने आप में आइसोलेटेड डिग्री है ही नहीं, बकवास डिग्री है, आइसोलेटेड डिग्री नहीं है सीएफए। जो इनके लिए जिनके लिए अच्छा है,
अगर आपने MBA कर लिया उसके साथ CFA कर लिया, मैंने CA कर लिया, CA के बाद कर लिया CFA, आइसोलेशन वाइज वो डिग्री इतनी अच्छी है भी नहीं। तो आई थिंक अगर आउट ऑफ ACCA इज जस्ट नथिंग, ACCA is nothing. तो आउट ऑफ ऑल द क्वालिफिकेशन विच आई सी राइट नाउ, CPA इज द समथिंग जो एफर्ट और रिटर्न रेशियो में सबसे अच्छा है। Okay. Any other question, guys? But I'll read about this also. I'm glad you told me. I'll just have a look at that also. Okay. Okay. Today, my weekends are generally back-to-back classes. So, subah se classes go that, so I'm not seeing. I'll have a look at that also. Thank you for making. No. This news is from October 1st only, sir. Actually, This news is from. 2-3 days back only this news has. Oh, I've not seen. I've just not noticed. Okay. Perfect. I'll have a look at this. Okay, sir. Thank you so much, guys. I'll see you tomorrow. Tomorrow we are going to start 5 o'clock. Okay. Even the link is for 6:30. Ignore that. We'll start 5. Okay. Okay. Bye bye. Good night. Good night, sir.